10 राइटर्स जो हैं वो जुड़ गए हैं और उनमें से जो 2 राइटर्स हैं वो ऑनलाइन रेवती और जैसे हमने प्रोग्राम का तय किया था वैसे ही इनका प्रेजेंटेशन होगा, अभी इंट्रोडक्शन है सर। तो धन्यवाद सुप्रतम। मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हुए साहित्य अकादमी के सचिव और डॉक्टर के श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के अतिथियों को अंग वस्त्रों के साथ सम्मानित करें। मैं सचिवों से अनुरोध करता हूँ कि चंद्रा जी को भी सम्मान करें। मैंने उनकी सीट ले रखी है। और अब मैं साहित्य अकादमी के सम्मानित सचिव डॉक्टर के जी हमारे बीच में कल्की जी और रेवती जी ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं। हम उनका भी साहित्य अकादमी की ओर से बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं अब साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूँ कि वो शब्दों से आप सभी का स्वागत करें। धन्यवाद अनुपम जी। रेस्पेक्टेड डॉक्टर माधव कौशिक जी, प्रेसिडेंट साहित्य अकादमी, प्रोफेसर सुब्रता कुमार जी, गेस्ट एडिटर of the Indian literature, and also he was the instrumental for having this kind of program who is designed. Professor Maharashtra ji, Professor K. Yino, who is a Sahitya Academy Award winner from Telugu and also got the Murthy Dev Puruskar. He is in Delhi, so he is also joined with us. And all the participants of this program and friends. I am glad to welcome all of you for this day-long symposium on creative expression and aesthetics of transgender writing. Friends, though there has always been interest in the subject and a handful of research works, gender and aesthetics has captured a lot of imagination in the past quarter century or so, and we see a number of research works and papers on this topic today compared to, say, 30 years ago. In India also we see quite a number of people writing on this subject, and interestingly, more colleges and universities are setting up departments on gender studies.
When it comes to the writings by LGBTQ authors and poets, there is an avid interest among the critics and the scholars, but there has also been a marked lethargy on their part to take the subject further. Some may say there has not been a huge corpus of LGBTQ literature, especially in the country, as the reason for no marked progress in this area. However, one should remember G.T. Krishnamurti's observer is the observed, and Martin Heidegger's historical essence of people is what they create art. Of course, there have been attempts by the host of LGBTQ writers in the recent years on the sensibility and aesthetics of transgender writings. Symposia like today's assume significance in this context. I am not saying this is the first or the only one or the most important discussion on the subject, but more such programs are organized across the country and covering as many linguistic and cultural communities, better it is for the literary milieu of transgender community in the country. I am not the expert on the subject. All I am doing here is sharing with all of you some of my thoughts, and eminent scholars in this symposium will present multiple perspectives on the topic itself and more. One issue that I am seeing which could be problematic is our existing aesthetic theories qualified to be deployed when it comes to the transgender writings. We have the history of writing for about 2000 to 3000 years that is dominated by binarisms, and any touch of shades that we have seen over centuries in any language or culture of the world is definitely not dominant ones. Being a transgender, expressing one's feelings from that, sharing the experiences in the world dominated by binary culture, etc., are necessarily tied on ontological paradigm, and hence the images, metaphors and examples used the transgender person are bound to be vastly different from that of others. Further, what we are having at hand is the serious movements of, say, 2 centuries versus the traditions of 2000 years or more, and needless to say that the latter always had to ensure these voices are not heard in mainstream cultural expressions. So, at least for a century or so, the experiences shared will surround countering hegemony of different kind, different for others but not for transgender writers. That is one issue, though there have been many attempts, especially in the USA, to judge the aesthetic sensibilities of transgender writings, employing the existing theories of aesthetics. So it is quite possible to do the same in Indian context too. As everyone can see, I have been outlining and not exactly highlighting the aesthetic elements in the transgender writings, for the transgender poets and writers will be demonstrating them in their languages, and scholars here will be discussing nuances and intricacies in the creative expressions of transgender writings. One another issue that I would like to point out before I conclude, the counter of hegemony of transgender person is different from the countering the hegemony of other marginalized communities in the world, though they are similar. The anger or emotion of the transgender writer is not the same as the writer from other marginalized writer, because the psychological reality and philosophical paradigm on the transgender writer is different from that of others. We have also arranged the readings by the transgender writers today so that one can first-hand witness the world of transgender persons and their creative expressions. We are very happy to organize this symposium, and I must thank Professor Sukrita Paul Kumar who has took the initiative for having this symposium, and I will be glad that more institutions come forward to organize similar conclaves and conferences across the featuring transgender writers, poets and scholars. Of course, Sahitya Akademi will strive to organize similar symposia in all the languages
we are striving to get the data from different languages, particularly from the transgender community or even LGBTQ. Whoever comes to me, I am requesting them to send some kind of data to us so that we can have a language wise or a national a big issue kind of conclave we can have it. But it would be welcome to sign if more institutions and organizations too are involved in collecting and preserving the creative expressions of transgender writers in all the languages. And needless to say, as I mentioned, Akademi will gladly collaborate with such organizations and institutions. With these few words, I am glad to welcome all of you once again. I sincerely hope that all those who are participating and attending this symposium stands benefited. Thank you all. Now I request President Sahitya Akademi, Dr. Madhav Kaushik ji, to give an inaugural address. No need to introduce him because almost all of you have participated in many of academic activities, and we have already introduced him well. So it is fortunate that he is here to inaugurate this. नमस्कार। वैसे भी परिवार में परिचय की जरूरत नहीं होती। ये हमारा मानस परिवार है जो आज इकट्ठा हुआ। श्रीनिवास राव जी, बहन सुकृता पाल कुमार जी, मालक श्रीलाल जी, नौकी रेणा साहब और सब दोस्तों और जितने भी लेखक अब विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। राव साहब ने अपने परिचय में दो चार बातें बड़ी गंभीर बताई, जैसे कि पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में जो हाशिए के स्वर हैं उनको एक तरह से हाशिए पे रखने का हमेशा प्रयास किया गया। साहित्य अकादमी ने पिछले कुछ सालों में हमने नए ये आयाम खोलने की कोशिश की। शुरुआत हमने नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं से की, उसके बाद आदिवासी लेखन, आदिवासी भाषाओं पे किया, स्त्री विमर्श पे, पर्यावरण पे, और पिछले कुछ सालों से हमने ट्रांसजेंडर और LGBTQ पे किया। तो एक तरह से साहित्य अकादमी के मन में एक बात है कि हम अभिव्यक्ति को बिल्कुल समान धरातल पे देखते हैं। कोई कहीं भी लिख रहा है, किसी भाषा में लिख रहा है, किसी जेंडर का है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो हमारी चीख है, जो हमारी सपने हैं, उनका तो कोई जेंडर नहीं होता। किसी आह कराह का कोई जेंडर नहीं होता। इंसान के खून का सबका रंग एक ही जैसा है। तो साहित्य में इस तरह के विभाजन हम नहीं मानते, और ये सारा जो आयोजन हो रहा है उस बात को साबित करने के लिए ही हो रहा है। दूसरी एक बात ये है कि पहले हमने जैसे रीडिंग्स की थी, अब रचना के साथ साथ आलोचना और बौद्धिक काम भी होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जब जुड़ जाता है क्रिएटिव काम के साथ, लेखन के साथ, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं। उसका सामाजिक पहलू भी समझ आता है, उसके आर्थिक पहलू भी जुड़े होते हैं, और समाज का दृष्टिकोण उसका आर्थिक पहलू ही व्यक्ति का निर्धारित करता है कि वो कहाँ खड़ा हुआ है। एक मुझे अपने शायर दोस्त का एक शेर याद आ रहा है कि तुमने सदमों की धूप देखी है, कोई तुझसा भी क्या हंसी हो। तुमसे सुंदर कौन हो सकता है जिसने दुनिया में इतने सदमे उठाए। तो आपके लेखन का जो सौंदर्य शास्त्र है वो तो सबसे अलग है। हमारे पास उसके पैरामीटर नहीं है, हम उन पैरामीटर्स को खोज रहे हैं कि वो पैरामीटर हम ढूंढें और आपके साहित्य का, आपकी क्रिएटिविटी का मूल्यांकन करें, ताकि दुनिया को पता चले कि दुनिया का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा अभी हमारी आँख से न जाए। वैसे भी दोस्तों, जैसे समंदर में वो तैरता हुआ आइसबर्ग होता है, उसका 25% ही बाहर होता है, 75% उसका पानी के अंदर होता है। हम उस 75% जो लोगों की नजरों से उठे उसको सामने लाने की कोशिश करें। और आप सब लोग हमारे साथ हैं, हम आपकी पीड़ा का सम्मान भी करते हैं और उस पीड़ा का संरक्षण भी करते हैं।
साहित्य के यही दो काम होते हैं और उस काम में हम लगे हुए हैं। राम साहब ने जैसे बताया, साहित्य अकादमी जो काम शुरू करती है तो उसको पूरे देश की संस्थाएं उसको मान लेती है एक तरह से, और वो एक चेन शुरू हो जाती है। ये हमने अक्सर देखा है। तो एक तरह से ये हमारा जो पहला प्रयास है, ये पूरे देश में इसका कोई ना कोई इसके आगे के चरण खुलेंगे, लोगों को जानने को मिलेगा। और हिंदुस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसकी 24 भाषाएं हैं, तो हमारी तो अभिव्यक्ति का और संवेदना का जो विस्तार है, जो उसका रेडियस है, वो तो बहुत बड़ा है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक एक ही तरह की समस्याएं हैं। फर्क इतना है कि उनकी भाषा अलग है, उनकी जीवन शैली अलग हो सकती है, लेकिन उनकी सोच और संवेदना एक जैसी है, एक ही तरह से वो अनुभव करते हैं। तो मैं बहुत अधिक ना बोलता हुआ आप सभी का सम्मान करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और एक तरह से जितनी ऊंचाई से अपनी आवाज़ उठाओगे, समाज उतनी जल्दी सुनेगा। चुप बैठने का कोई अर्थ नहीं है। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो तबीयत से पत्थर उछालते रहिए, आकाश इंतजार कर रहा है कि कोई हमें सुराख करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। Thank you, sir. Now, I request Professor Sukrita Kumarji, the guest editor of Indian Literature, and as I already mentioned, who is the instrumental in having this symposium, because she has a plans to have a special issue of Indian literature, the history of Akademi. That is going to be the first time. Anyway, that she will give a complete things at the end of the symposium. But that was the idea behind this symposium. So now she will give the outline of the symposium and there will be introduction. I'm so glad that Ram Sahib and Madhav Kaushik Sahib have, both of them have enumerated, actually, laid out the importance of a thing like this. It is not just the theme of the symposium, but I think it has something to do with and not just to do with the questions that are raised, but also to see how actually margins, what we call margins, is all humbug. Nothing is in the margins, because actually we need to contain it all. And if at all there are margins, margins are the ones that contain all reality. Because it is through the margins that the containment happens. So I think this containment that we are talking about, we do not understand adequately as what we call mainstream. We do not understand how much there is the variety of pain, variety of anguish, variety of rights, variety of, come to the basic point, variety of the sex reality, sexual identity. How much of diversity there is in as far as sexual identity, which is actually the center of a lot of stuff that we do in life. But that is something that is totally invisible. That's why transgender reality is kind of invisible in the society. And I think there is visibility that comes through the writing, the voices that are raised by transgender writers, who, I was just having a conversation with some in my room, and one of them said, we are no longer innocent now. Why are we not innocent? Because we have become conscious of our writing. We have started doing a little bit of thinking about what we are writing. There was a time when, I'm talking about senior writers, there was a time when we were spontaneously sharing our pain and anguish, etc. However, if, as the writer who was talking said herself, if the pursuit is that of truth in writing, if it is the pursuit of truth, then no matter what the embellishments are, essentially the truth survives. And it is truth that hits you hard in literature. It's very difficult to contain truth ordinarily. One needs to have a lot of courage to contain that truth.
And literature, to my mind, is a mode of activism. It is activism because it is through literature. Literature becomes the most powerful tool of reaching out, of communication, of expression. So it's not just therapy for self-expression, but it has also something to do with our realization of the outside in terms of outside of or inside of the margins, what we ignore. We need to feel the guilt for that. You know, when Sahitya started happening, in the beginning they declared, they said, we want the oppressor to realize that that I am the oppressor. And therefore I will tell my tale in a very truthful fashion. And I think the same is true here also. It's the same. That you tell the truth in such a way that you look at the so-called mainstream saying, oh my God, is this what we have created? That we have no communication. We need to communicate. We need to understand. So through this literature, we have to understand the reality that exists in the transgender world, the variety that exists there. And for some reason, some of them are not even able to write because of the pain that they suffered from. And the attention that is required even from transition, the whole process of transitioning. And the pain is all the time live. And the atmosphere is that of calm in the society. Is it? The calm is not there only because it is in this, under the consciousness. It is in the subconscious. So, on the one hand, writing is happening, but as Rausab also pointed out, critical thinking is not. We don't have this, we haven't worked out the parameters. We haven't worked out the tools with which to examine this literature. This literature exists. So we as academics, we as readers need to not only accept it, but we need to respect it and give it adequate space in our institutions so that the adequate recognition and understanding and respect develops in the society. I believe that this is, literature is also, has to be inclusive of social justice and ethics and aesthetics. And this aesthetics has to therefore contain the ethics and the social justice part that we have to work out in developing the tools, critical tools to examine the literature that we are talking about. So I think in this symposium, the reason why we are talking about this is because in this symposium, if you notice, we have 3 sessions. The first session is of course, the inaugural, where the perspective is set up. The second one and the third one, if at all they can be distinguished amongst the two, distinctive features and aesthetics of transgender writing is one. First, we need to identify what are the distinctive features. And we need the writer's voice to also talk about why am I writing? What is my literature all about? How has it got the cloak of literature, the term? How is this label given to this? And also, therefore, why do I write in a particular way and create aesthetics for it? That there is a sense of beauty there. My सौंदर्य शास्त्र, वो सौंदर्य शास्त्र क्या है? क्योंकि मेरी बात आपको आपकी तरफ पहुंचाना चाहिए, तो वो पहुंचाने में कोई शक्ति चाहिए, sense of appeal चाहिए, कोई beauty चाहिए, sense of beauty. So what are these elements? The second one is talking about how do we therefore develop the critical tools for transgender literature. What are these things? So for this is the involvement of the writer also that is required in the thinking of this. अगर आप हमारा एग्जामिन करें तो वो भी टूल्स नहीं यूज करेंगे जो कि सो कॉल्ड सौंदर्य शास्त्र ऑफ द मेनस्ट्रीम लिटरेरी टेक्स्ट है, तो कैसे वो अलग है, डिफरेंस के ऊपर निर्भर करेगा, recognition of the difference and then the recognition of development of the tools. And the last section of course is going to be readings. वो readings पे evolve होगा. I hope everybody is going to read, and therefore these 10 writers who are going to give the readings are going to then get involved in a discussion with everyone on the aesthetic normative. What are the norms that are presented in the writings that we have just heard. So broadly, it
sounds very simple, but it's very tough. And when we are actually engaging with developing documents, it takes a very long time. But कहीं तो शुरुआत होगी, तो then we will go and explain more to the documents. Thank you. We will call out to the speakers of the first session. We will start with Revati, then we have Azan Singh. Would you like to come here? Yeah, वहीं से भी बोल सकते हैं. ठीक है, वहीं से बोलो. तो देविका, देवेंद्र, फिर उसके बाद Viktaji Subramaniam, who is going to give us the presentation from the screen. Then who will speak? Chandra. Then Monavi Bandopatya will speak. After this, Sanjana Simon. That will be the order in which we will have them speak. And we can then, of course, if there is time, then we will also have a little bit of discussion. Excuse me, Paul, sorry to have you. As you have given a beautiful introduction of each and every participant and the audience scholar writers out here, I'm having one of India's first transgender photographer. His name is Shivani Reja. He's also seated with me in this time, so I want to like, if you can take his name also, he's also part of that, so it's really good. Yeah, welcome. Absolutely welcome. Thank you very much for being here, and we will involve you more and more into our program. Thank you. So may I call upon Revati to speak, please? Can you hear me? Revati, can you hear me? मैं बोल सकती हूँ ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you so much. 1999 में LGBTQI राइट्स का जो काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऑफिस असिस्टेंट थी. उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटी सी एक लाइब्रेरी है. वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ने के लिए बहुत मेरे पास था, लेकिन कुछ लोकल लैंग्वेज नहीं है. और भी अपना कम्युनिटी का ऊपर कोई लिखा हुआ क्या करको मैं ढूंढ रहा था, लेकिन ऐसी किताब नहीं मिल रहा था. गे लेस्बियन जो होती है वो भी अमेरिका लंदन में जो रहती है, अंग्रेज पढ़ती है, उनके बारे में उन्हें लिखा है किताब है उधर, लेकिन हमको तो इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है. लेकिन लोकल लैंग्वेज चाहिए करको 2004 में मैं लिखने के लिए शुरू किया था. उसके पहले मार्च 8 करके एक बड़ी फंक्शन बनाता है वुमेन्स डे के लिए. एक एक मुद्दा पर रिफॉर्म लेके जाता था, एक एक ऑर्गेनाइजेशन को 5 मिनट देता था. 5 मिनट में क्या बात कर सकते हैं, लेकिन पोएम लिख सकते हैं ना, 5 मिनट में हम बोल सकते हैं ना. वो ऐसी सोच को पहले मैं पोएम से मैंने शुरू किया था, लेकिन इतना अच्छा पोएट नहीं है, इतना अच्छा राइटर नहीं है. मैं राइटर भी नहीं है, मैं पोएट भी नहीं, लेकिन अपना दुखों को हम राइटिंग कर रहे हैं. बस अडोसा को राइटर बनाया. धन्यवाद. ये एक बात है, हम लिखने के लिए शुरू किया है. लोगों को अपना मायती मुद्दा मिलना चाहिए. सर गलती से हमको देख रहे हैं, गलती दृष्टिकोणों से ये दुनिया देख रहे हैं. हम कैसे पैदा होते हैं, ये लोग को आकाशीय पर पैदा होते हैं, इनका लिंग क्या रहते हैं, वजनन रहते कि इनस रहते कि ये कुछ भी नहीं मालूम है. बायोलॉजिकली ये लोग इजरा बनाते हैं करको सोच रहता है. और ऑपरेशन क्या होती है, उसमें क्या पेन होती है, क्या सरकार में क्या बेनिफिट है, बेनिफिट नहीं है, ये सारी कुछ भी पब्लिक को मालूम नहीं पड़ता. और कोई सिर्फ लोग हमारे बारे में कोई लिखा हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं लिखो बेटे. अपने बारे में वो लोग को रिसर्च करता नहीं है, अपने के साथ बैठ के मुलाकात को लोग को बात कर को लिखता भी नहीं है. बस न्यूज़पेपर पढ़ता है, कुछ गूगल में सर्च करता है, उसमें कुछ मैसेज आ रहे हो तो उनको देखो लोग लिखता है. इसलिए जरूरी होना चाहिए अपना बारे में हम लिखना चाहिए. इसलिए 2004 में
उनर्व पूर्व में एक तमिल किताब लिखा है। तमिलनाडु में 16 उम्र से 93 उम्र तक थोड़े के ट्रांसजेंडर लोग उनकी रिसर्च किया था। रिसर्च मतलब कैसे रिसर्च करना है, हमके क्या मालूम है, लेकिन टेप रिकॉर्ड रखे जाता है हम लोग को चूना में पटन का टेप रिकॉर्ड होती है, वो टेप रिकॉर्ड ऑन हो क्या, रिकॉर्ड हो रही क्या, उसमें हमको मालूम। लेकिन हमारा रिसर्च कैसी रहती है, एक ट्रांसजेंडर हो, अपोजिट में एक ट्रांसजेंडर है, मेरा स्टोरी में उनको बताएंगे, उन्हें स्टोरी मुझे बताएंगे, हम दोनों अपना दुखों को, अपना गमों को, अपना जीवन को हम शेयर करें। ऐसी पहले किताब में लेके आया था। बाद में तेलुगु में कुछ आर्टिकल आया था, उसके बाद पेंगुइन ने देखा, पेंगुइन में वो किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए मेरे से परमिशन पूछा था, लेकिन उनसे बोला मेरे से ये किताब को मत करो, क्योंकि मेरा मन में कुछ हुआ था, सब कुछ लिख दिया क्या हमारा ट्रांसजेंडर के बारे में, इसलिए मेरा ऑटोबायोग्राफी लिख दिया। एक राइटिंग होता है तो ऑटोबायोग्राफी खुद लिखता है और दूसरा कोई लिखता है, दूसरा कोई ऑटोबायोग्राफी दूसरा का लिखने से अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखना बहुत मजबूत होती है। वो सोच को मेरा ऑटोबायोग्राफी में लिख दिया। तो 2000 में पेंगुइन में वो आया था। अभी वो किताब 350 यूनिवर्सिटी कॉलेज में सिलेबस में रखा है वर्ल्ड लेवल पर। ये राइटिंग ये हम एडवोकेसी के तरीके में देखते, पर्सनली मैं देखती हूँ कि एडवोकेसी के तरीके। अच्छा, सिसजेंडर लोग जो लिखती है, ट्रांसजेंडर लोग जो लिखती है, क्या डिफरेंट होता है? बहुत कुछ डिफरेंट होता है। सच से लिखती है, अब उससे झूठा तो कुछ नहीं लिखती। तमिल में बोलता है कभी देखी कोई अलग करता है, पोयम को झूठा बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अपना कविता को, अपना राइटिंग को सच बहुत ब्यूटीफुल। हम सारी लिखते हैं, हम सच लिखते हैं, लेकिन बहुत कुछ हम छुपाते हैं, क्योंकि हमारा माँ बाप भी डरता है, ये दुनिया भी डरता है। आजकल मेरा किताब है ना, हमारा ट्रांसजेंडर का किताब है ना, एक औरत क्या लिखने सकता है वो सारी हम लिखते हैं, कितना स्ट्रांग हो। एक हरासमेंट के बारे में आप लिखने के टाइम, ये हरासमेंट खाली ट्रांसजेंडर नहीं होता, रेप खाली ट्रांसजेंडर नहीं होता, औरत को ऊपर भी हुआ। जो औरत ना लिखा पाए वो सब हम लिखने के लिए हम स्ट्रांग करते, क्योंकि इतना दुख है। एक रूम में बाघ को खाना बिना खाना से उसको रखे बताओ, कैसा भी उसको तोड़ को लेके जाओ वो खाना है ना, वैसे ही रहते। कितना दिन तुम लोग हमको मारेगा, कितना दिन हमको तुम लोग सेपरेट करेगा, कितना दिन हमको ये दुनिया में राइट्स नहीं मिलेगा, कितना दिन तुम लोग हमारे बारे में जानकारी नहीं है। तो ये राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और राइटिंग का साथ साथ आज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किताब सब लोग नहीं पढ़ रहे, थोड़े लोग किताब पढ़ रहे, थोड़े लोग पोएम पढ़ रहे, थोड़े लोग ड्रामा देख, प्ले देख। इसलिए अपना राइटिंग को हम प्ले का रूप में हम लेके जाने से अभी मैं कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रांसजेंडर कोई कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज में ये राइटिंग में, ये पोएम में जो मैं आया हूँ, क्या बोलते हैं तमिल में बोले तो बहुत तृप्ति मिल रहा है मेरे को। मेरा मन में क्या दुख था, क्या रोना था, आजकल कुछ भी नहीं है, पूरे में बाहर रख दिया, खुदा को बाहर रख दिया। अभी तुम्हारा जवाब है, क्या करना है, क्या है, धन्यवाद। Thank you so much. Thank you, because I think you have stuck to the time, because that is one of the constraints that we have. I'm so sorry. Everybody said, what can I say in 5 to 6 minutes? But we have not much time. This is just an introduction to what you want to say. So speak like you talk in bullet points, right? So, and don't be threatened, but our dear friend Ankara is here with the bell. So in case you run away with time, she will hold you back, right? She will give the bell, and please at that time you have to hold your horses, right? So we go on to the next speaker. We have Azan Singh here. उम्मीद है सबको आवाज़ आ रही होगी और क्लियर होगी, ये भी उम्मीद करता हूँ।
जब जैसे कि पानी एक होता है, सब रास्ते बंद कर दिए जाएं तो पानी अपने निकलने का रास्ता कहीं ना कहीं से इख्तियार कर लेता है, बना लेता है और वो निकल जाता है। ऐसे ही हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारे वेग हैं, कितना भी आप उनको पकड़ो रोको, लेकिन वो निकल जाते हैं, बता देते हैं अपनी तकलीफ, अपनी बात, वो चाहे शब्दों का रूप इख्तियार करें या किसी मंच पे आकर के वो डांस के थ्रू हो या किसी और एक्सप्रेशन के थ्रू हो, वो रास्ता निकाल लेते हैं। यही है एक राइटिंग, एक लिखने का जरिया जो मैं मानता हूँ कि यही से लिखा जाता है। लिखने का, जैसे सर ने भी कहा था, मैं सोच रहा था बोलूँगा ये बात भी बोलूँगा, लेकिन कहा जैसे लिखने का, कला का कोई आकार या कोई ऐसा आकार नहीं, कला का कोई जेंडर या कुछ भी ऐसा नहीं होता। कला को कला देखिए बस, किसने लिखा, क्यों लिखा, कैसा लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा। अब अगर मैं खुद को एक बार शीशे में खड़ा होकर देखता हूँ तो ऊपर वाले की कला हूँ मैं कैसा बनाया हूँ। हम सब बैठे हैं, सब अलग है, अलग अलग है और सब बहुत खूबसूरत है, सब नायाब है अपने रूप में, अपनी बात में। और अगर कोई बात करे कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति कैसा लिखता होगा, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, अगर कोई मुझे कहे तो मैं तो एक औरत, जिसको हम सिर्फ फीमेल कहेंगे, मैं उसका दर्द भी जानता हूँ। मैं बीइंग अ मेल, मैं अपना दर्द भी जानता हूँ। मैं तो दो दर्द झेला हूँ, दो लोगों को एक साथ समझा हूँ। तो मैं क्या अच्छा नहीं लिख पाऊंगा, अच्छा बुरा? फिर हम उस तराजू में तोलते हैं अपनी लिखावट को कि अच्छा लिखा, बुरा लिखा, कैसा लिखा। जब चीज़ यहाँ की बजाय, यहाँ दिमाग के बजाय यहाँ से निकलती है तो लोगों को यहाँ से ही उसको जोड़ना चाहिए, यहाँ से नहीं, या यहाँ से नहीं उसको अच्छा बुरा बोल के या क्या क्यों लिखा है, नहीं हम इसका लिखा नहीं पढ़ेंगे। जब तक नहीं पता था कि ये ट्रांस व्यक्ति है या ये कौन है, तब तक हम पूछ रहे थे अच्छा किसने लिखा है, अच्छा लिखा। जैसे ही पता चला कि किसी ट्रांस व्यक्ति या किसी दलित का लिखा हुआ है, नहीं ठीक है, लिखते होंगे ये लोग, अच्छा ठीक है, हल्के में ले लेते हैं फिर हम, क्योंकि हमने उसको एक लेबल लगा दिया, हमने उसको एक तराजू में तोल दिया हर परख से। क्योंकि कला तो है ही पार, कला आती ही तब है जब सब कुछ छूट जाता है पीछे, आप कुछ कह नहीं पाते लेकिन आपको शब्द मिल जाते हैं जो बहुत कुछ कह जाते हैं। आप उन भावनाओं को समझेंगे जब, तो कला अपने आप आपको अपना लेती है, अपना बना लेती है, कुछ पीछे नहीं छोड़ती। इसीलिए संवेदनशीलता लेखकों में, या चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, ज़्यादा होती है। उनका जो विजन हम कहते हैं, हम बैठे हैं, उनको हर चीज़, इस हिलती हुई, अभी ये पत्ता हिल रहा है, इस हिलती हुई पत्ती में भी वो एक ऐसा भाव ढूंढ लेंगे जो शायद कभी किसी ने ना देखा हो, ना पढ़ा हो। अब सड़क पे सूखी पत्तियां भी पड़ी होती हैं, लोग रौंद के निकल जाते हैं, लेकिन एक कोई उस चीज़ को भावना से अगर जुड़ेगा, वो एक बार जरूर देखेगा उसका जन्म से आखिर तक, वो सूख के जब गिरा वो शाख से, वो तक वो महसूस कर लेते हैं। तो ज़्यादा शब्द ना लूँगा, ना ज़्यादा टाइम लूँगा, अभी के लिए इतना ही है कि जब ये सारी चीज़ें हम समझ लेंगे, जब मैं अगर अपनी बात करूँ तो अपना भी, जब मेरे पास कोई नहीं था कहने के लिए कि मैं किसको बताऊँ अपने जो अंदर में दो आत्माओं के साथ, एक आत्मा एक है लेकिन शरीर और आत्मा दोनों अलग है, इसका युद्ध में कैसे बताऊं? ना मेरी माँ है समझेगी, ना मेरा बापा, ना कोई फैमिली से कोई नहीं समझेगा, मैं क्या करूं? तब मैं लिखता था, तब शुरू करता था कि शायद ये शब्द, वो शब्द सुन के सब वाहवाही करते थे। कॉलेज टाइम से लिखना शुरू करते, सब सुनते थे, वाहवाही करते थे। इंटर कॉलेज गया हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी गया हूँ, हर जगह वाहवाही होती थी, लेकिन वो दर्द सिर्फ वो शब्दों को लोगों ने समझा, उस दर्द को पता नहीं समझा या नहीं समझा, देखा या पहचाना या नहीं समझा। मेरे पूरे अभी तक की एज में मैंने जितना भी थिएटर किया, जितना भी लिखा मेरी फैमिली ने, मैं बहुत खुश हुआ था उस टाइम जब थिएटर का मेरा एक नाटक था। तो मेरी मम्मी और मेरी बहन पहली बार आई थी और वो बैठी थी, और जब मैं ऑफ स्टेज आके उनको मिला, वो अच्छा तुम थे, और वो रो रही थी कि तुमने बहुत अच्छा कहा, तब मैं बहुत खुश हुआ था। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो एक लेखक, एक पोएट, साहित्यकार लिख सकता है, परोस सकता है शब्दों को, और हमको बस उसको समझना है, अच्छे बुरे किसी भी तरह के लेवल के बिना, किसी तराजू के बिना। जी शुक्रिया। आपने जो एक बात कही वो बहुत ही खूबसूरत है, और ये वैल्यू ऑफ
कविता में आप देखिए कि माँ भी नहीं समझ पा रही है, और वो आत्मा और बॉडी का जो एक डाइवोर्स जैसे होता है या बैटल जो होता है, जो आपने झेला और जो एक्सप्रेस किया, वी लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू योर पोएट्री। जरूर जी, जरूर, शुक्रिया। थैंक यू। हमारे अगले वक्ता होंगे देविका देवी। सबसे पहले तो बिकॉज मेरा जोड़ा जो है, जैसा मैंने अपने बारे में बताया, मेरा नाम देविका देवेंद्र मंगलामुखी है और मैं अंग्रेजी साहित्य की शोध करता हूँ। अंग्रेजी साहित्य पे लिखती हूँ और भारत की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ जो अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से। For me, if we can talk about the creative expression and aesthetics of the transgender writings, सबसे जो तथ्यात्मक, मैं हिंदी का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो हम लोग रिलेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आई होप if we can talk about the aesthetic of the transgender writings, if we can talk about the writers, if we can talk about the literatures, सबसे बड़ी बात जो हमें अपने मस्तिष्क में रखनी होती है और जिसे देख के हम अपना लेखन शुरू करते हैं या हम वो होता है कोई ना कोई आपका इंस्पिरेशन होता है। One will be when I started writing, I always adore Rabindra Tagore जी, झुम्पा लहरी जी, अरुंधति रॉय, जहाँ से मुझे वो वाइब मिला कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर महिला सड़क पे 10 रुपए 5 रुपए मांगने वाली देविका, अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए कुछ ऐसा है जो मुझे समाज में भिन्न बनाता है। तो वो जो इंस्पिरेशन है, वी कैन टॉक अबाउट द इंस्पिरेशन फ्रॉम द सीनियर, व्हाई आई कॉल सीनियर, बिकॉज जिससे हम थोड़ा भी सीखते हैं, क्योंकि साहित्य एक रचनात्मक पद्धति से जुड़ा हुआ एक कह सकते हैं एक पहलू है जिसमें एक व्यक्ति बिना कुछ बोले अपने शब्दों से बहुत कुछ कह जाता है। तो जब मैंने अपना शुरू किया, when I started writing, and if we can talk about the transgender writings and aesthetics of the transgender writings, वो सबसे पहले होगा इंस्पिरेशन। सेकंड हम बात करें the vibe of our writings, एक व्यक्ति, एक लेखक अपने आंतरिक मन में बौद्धिकता के साथ जो नए तथ्यात्मक पहलुओं के निष्कर्ष पे आता है। जैसा कि अभी बात कर रहे थे, सर ने बोला, सेक्रेटरी साहब ने, व्हाट अबाउट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द राइटिंग्स। सिर्फ हमें पोएट्रीज लिख के या फिर इफ वी कैन टॉक अबाउट हमने ऐसे लिख लिया, पोएट्रीज लिख लिया कि हम अटेंडेड सेवरल और लिटरेरी इवेंट और हम उपन्यास लिखते हैं, कथाएं लिखते हैं, पर क्या हम उनका आलोचनात्मक तथ्य पहलू से उसको सुधारते हैं और उसको नया क्रिएटिव बनाते हैं? तो वो सबसे बड़ा होगा द एस्थेटिक ऑफ द राइटिंग, व्हिच विल बी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ योर राइटिंग। फोर्थ, अगर हम बात करें बीइंग अ ट्रांसजेंडर राइटर लाइक देविका, व्हाट आई हैव taught from the society, मुझे सिखाने वाला the society है। When I started writing, I write for gender-based violence। मैं लैंगिक असमानता, लैंगिक समानता, नारी सशक्तिकरण के ऊपर लिखती हूँ और एक ट्रांसजेंडर महिला कैसे how a transgender woman can be an empowered transgender woman, उसके बारे में मैं अपनी कविताएं लिखती हूँ और मुझे निबंधकर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तावित करना। If somebody can ask who you are, Devika, and what are your writing skills, I would like to say I'm an essayist, because जब आप अपने जीवन के तथ्यों को बहुत बड़े रूप से एक निबंध के रूप में लिखते हैं, मुझे लगता है वो सार्वभौमिक होता है, and it will be universal to not only understandable, it's very universal, but universal to उसको समझने के लिए, सोचने के लिए और आने वाली जनरेशन को एक बहुत नया और महत्वपूर्ण साहित्य देने के लिए। तो मेरी कलात्मक अभिव्यक्ति की बात करें, because I'm an artist, so कहीं ना कहीं my literature, my writings is very much having a taste of the art and culture, especially of art। और अगर हम बात करें हीरोइन एंड हीरोइन एज हिंदी साहित्य में होते हैं कि नायिका और नायक थे, तो कहीं ना कहीं my साहित्य has like sometimes when I write like to empower transgender women, मैं खुद को एक सुंदर नारी के रूप में प्रस्तावित करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि I'm a very beautiful woman and I'm writing, तो जो उसका सौंदर्य है, कब वो अभिसारिका होती है, कब वो विरह कंठिता बनती है, कब वो स्वाधीन भर्तुका होती है, कभी वो कलंकरिता होती है, the expressions of the heroine, the each character of the heroines which has to be portrayed into the writings, तो वो सबसे बड़ा पहलू होगा। और जो मैंने when I started writing, और सबसे बड़ी बात एक ट्रांसजेंडर लेखक की बात जो सामान्य लेखकों से हमें उम्दा बनाती है, हमारे जीवन में होने वाले भयंकर से भयंकर और चरम सीमा से होने वाला डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा,
बुलिंग और ह्यूमिलिएशन। आज मुझे रास्ते में किसी ने हिजड़ा बोला, मेरे बालों को पकड़ के मुझे अब्यूज किया, वो मेरी कथा बन गई जिसमें मैंने लिखा कि एक रोज मैं रास्ते पे चल रही थी, when somebody has seen my hairs, और उसने मुझे पकड़ा और मारा। वो वेदना, वो कारुण्य, द वेरी अंकिता के रूप में सामने आता है, and that's the style of my writings। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि वो वेदना जब मैंने सही, वो पेन मैंने सहा और वो मेरे रचनात्मक काव्यों में आया। तो मुझे लगता है मेरे लिए द राइटिंग्स सबसे इम्पोर्टेंट, द इंटरनल इमोशंस एंड व्हाट यू हैव थॉट, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द सोसाइटी, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स। और फॉर मी हमारा भारत अछूता नहीं है क्योंकि मैं कहती हूँ कि सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। अंग्रेजी साहित्य में जो यहाँ बड़े साहित्यकार बैठे हुए, मैं एक बार कंक्लूड करना चाहूँगी सभी साथियों के साथ, only 30 सेकंड मिसेस पॉल। अंग्रेजी साहित्य में हम कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं और हम एक ऐसे व्यक्ति हैं, भारतीय लेखक, जो मैंने अभी तक रिसर्च किया अंग्रेजी साहित्य में। हमारा साहित्य सिर्फ धरातल पे काम नहीं करता है, हमारा साहित्य आकाशीय रूप से काम नहीं करता। हमारा साहित्य, अंग्रेजी साहित्य जो हमारे लेखकों की लेखनी है, वो बौद्धिकता से काम करता है और सिर्फ हम साहित्य पढ़ते नहीं हैं, उसको जीवन में उतारते हैं और समाज के लिए बड़ा एक मिसाल होती है। थैंक यू सो मच। Also जो आपने कहा कि साहित्य हम अपनी जिंदगी में झेलते भी हैं एक तरह से, उसी that is what we live for and that is what we live. It's a lived reality. साहित्य is a lived reality. Wonderful. Thank you so much. Shall we ask request Captain now to come on the screen, please? Yes, Can you hear hear me? Yes, I can. And once again, thank you very much for this invitation to speak here at the Sahitya Akademi, to our President and Secretary and Sahitya. Good morning again. Especially this topic, I believe that is one of the very first intellectual conversation on transgender literature which has happened in our country. Beyond our literature festivals, this conversations that we are having today is deep, intellectual, and I'm sure it's going to bring a lot of results aftermath. The topic that is given to me and to the Rabindra and others as well is very interesting. The world of literature is vast and diverse, encompassing a wide range of voices and perspectives. Within this expansive landscape, transgender literature, especially our writing, has emerged as a very distinctive and unique genre, exploring our unique experiences and identities of course, transgender individuals. Especially our writing has often undergone a very personal journey to understand and express our true selves. Because I believe that when I was a teenager, when my mother was not able to understand me, my father was not able to understand, even my best friends were not able to understand my personal journey. I used to take a pen and a paper and I used to write poetry. That was my outlet. And this journey is the central theme in much of transgender literature. These narratives often delve into the complexities of our gender identities, gender fluidity, exploring the challenges faced by us as we navigate social expectations, stereotypes, biases, stigma, violence, as well as the acceptance and love, of course. Another hallmark of our transgender writing is its emphasis on authenticity and lived-in experiences. Transgender authors like me, Revati, Madhavi, Devika, and Vijayaraj Malika, Sahitya, and all of us, especially transgender women, we draw from our own personal stories and emotions, and as a woman-identified human being, as a feminine human being, and also as a transgender human being. Often, the readers will experience a raw and honest portrayal of what it is meant to be a transgender. This authenticity is crucial in challenging misconceptions and fostering empathy among readers who may not be familiar with the transgender experiences. Our writings open the door to our world, our heart, our lives, our lived-in experiences.
our writings are also frequently employed, and most of our writings are frequently employed a non-linear narrative structure, which is very mirroring of our souls, our personalities, our highs and lows of our life, our happiness and sadness, our losses, failures and successes. By breaking away from traditional storytelling, we are able to convey the multifaceted nature of our identities and the complexities within our identities and experiences, of course. And on the aesthetic sense, our writing embraces a wide range of styles and genre. Of course, as you all know, poetry, from poetry to memoir, autobiography, fiction, and there are also like art and poetry together. This diversity of voices and approaches underscores the richness, urgency, and vibrancy of transgender literature. Additionally, I also wanted to bring to the attention that voices from the Northeast, especially from Meghalaya, Manipur, Sikkim, Assam, and Nagaland, these transgender voices are yet to be spoken. There are very few. From Northeast, today we have Santa. The problem is, it's so difficult for even us transgender writers to identify those people and bring them to the mainstream. And I understand how it is for the Academy and the publishers and everyone. So I think it's a duty of our community to encourage our community writers who are from Kashmir or Lakshadweep or from Andaman or from Meghalaya or Nagaland. These voices need to be heard. And there's no better place for us than Sahitya Academy to make it nationwide, to bring it to So Sahitya Academy is the only organization that brings all of us together in one place, of course. So, am I audible? Yes. Okay, thank you. So this is the important factor, is that all our voices have to be together, and of course these collective experiences make not just our literature rich, but I think it makes Indian literature rich. And these collective experiences are human experiences. And when they come out as poetry, as art, or as writing, as biography, as fiction, storytelling and all that, it becomes so beautiful. And especially, our lives are important. Transgender lives matter. At times, especially this month, I would say this month worldwide is known as Transgender Awareness Month. November is. So, and on November 20th, we have Transgender Day of Remembrance across the world, where we observe the dead people who are being killed, murdered because of transphobia. So it's very appropriate that this event has been held this month, and I'm really thankful for this opportunity, because for me, I've always wondered if there should be a discussion on a very intellectual level about the creativity and aesthetics of transgender literature and transgender writing. This has been one of the very first and one of the most important programs like this. Thank you, Sahitya Academy, thank you, the President, and thank you, Supraj. Thank you. Kalki has laid out a very good agenda for us. We have to look at. But basically what she's been talking about is how the entire country's diversity in transgender needs to be collected here, and how we need to do it. That is also an indication as to how our volume should be, our special issue should be. Because basically we are looking for material from all parts of the country in terms of the transgender rights. And I think one of the points that she's talking about is as to how the slogan transgender writing matters. I think that is important, because it is through writing that we get to understand through the special vocabulary and metaphors and phrases that have been created for and by transgender writers.
because there is a distinctive language also. And in fact, we were having a conversation about conversation between Santa and Vijaya in my room. It was an informal discussion जिसमें ये बात हो रही थी कि कैसे नॉर्थ ईस्ट की राइटिंग जो है, particularly मैतेई लैंग्वेज में जो कुछ हो रहा है, उसका डिफरेंस फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन केरला, और वो लैंग्वेज में भी जो डिफरेंस आया, तो अंग्रेजी लैंग्वेज में भी जो डिफरेंस आया, बिकॉज द वोकैबुलरी इज डिफरेंट इन बोथ द स्टेट्स. So how do we connect these languages within one single language, जैसे चाहे हिंदी है, और इसमें एक तो पैन इंडियन है और एक स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, एक रीजन के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है. Thank you very much, Kalki, for being with us. I know you have to travel, so we let you go. If you can stay, you are most welcome. I'll take your business. I'm thankful to have you next downtown. Shall we go to Kuhu now? Kuhu Chandna, and you have introduced yourself already, so go ahead. Since we have just 5 to 7 minutes, I'll briefly sketch. I will briefly talk about the major interventions in the arena of genre breaking and global trans language produced by Hijra Lingo as illustrated through the coinages used for their specific rite and rituals, alternative family structure, and re-articulation and reappropriation of certain speechily surcharged words. And I will be using the lens of Hijra autobiographies for that, as deviant desires and autobiographies have long standing relationship. But before understanding that, we need to understand the larger umbrella of queer aesthetics. Queer aesthetics is a term used by Raj Rao for the first time. To quote his word, you take something as you know it, as it actually exists, and turn it on its head. This is achieved through the use of literary technique. This is what we may call a queer or transgressive aesthetics, which is radical, and this is partially achieved through the hybridization of language and so-called meaningful deliberate corruption of the language. There is a raw realism and deliberate sensationalization coupled with the inversion of aesthetically appealing literary language to protest against the traditionally accepted literary modes of writing. For the traditionally literary language is coded as heterosexual, and the global gay language is still white in essence. And hence there is a need for reinventing a specific queer language, trans language, imagery and technique by the Indian writers. In 1995, William Lee, for the first time in Beyond the Lavender Lexicon, talks about the need for interrogating the use of a specific language by queers. Further, Rusty Barrett postulates the idea of speech community, according to which the queer community can forge a bonding through sharing specific linguistic traits. However, on account of different hierarchical disposition within queer community, due to the class, gender, race, active, passive, butch family, the need for resisting and reinventing the popular linguistic codes also arises. And that is why the population of Hijra Lingo in the larger queer language is a significant intervention. And it bears a close semblance with the concept of sword speak. Now, what is sword speak? Sword speak is a classic example where it is a specific gay lingo of homosexuals in the Philippines. It is a unique amalgam of Tagalog, English, Spanish and Japanese, along with the novel juxtaposing of trademark brands and celebrity names. And this variety of gay lingo helps them to assert their unique individual identity within larger queer umbrella. Now, in a similar fashion, this language community formation can also be seen in the Indian context, in the specific Hijra terminology used by Hijra, as because of their alternative family structure and matrilineal society that have very particular terminology to address the various members of their clan, such as Badu Dadi for great grandmothers, Dada Guru for grandmother's Guru, Nana Guru is a Guru's Guru, Guru is a mother, Kala Guru is Guru's sister, Guru Bai is sister, Bada Guru Bai is elder sister, Chota Guru Bai is younger sister, Chela is daughter, Nati Chela granddaughter, Chandi Chela great granddaughter, Sarak Nati great granddaughter's daughter. Now, another patent aspect of the lavender linguistics is code switching.
which is used to critique the dominant oppressive culture. Rusty gives an example of code switching by citing the example of black drag performers who deliberately use female white English as a tool of inversion and create ruptures in the stereotypical biases regarding ethnicity and gender. In the similar fashion, the terms like nirvana and sannyasi or ascetic have been appropriated by Hijras in such a way that they have completely transformed the meaning of nirvana. In Hijra terminology, nirvana refers to castration and transformation from male to female. Now, there has been a huge critique pertaining to trans-insensitive language regarding SRS, sex reassignment surgery, and how the use of queer-sensitive and trans-positive language is absolutely imperative for counselors. At the cross of this, Blanchard gave a suggestion that phrases like comorbid psychopathology, gender identity disorder, clinical management be replaced with client-friendly ones like multiple mental health issues, gender distress, discomfort, gender variance, diversity, and transgender care. Now, how beautifully transcending all these pejoratory connotations of the terms like GID and gender dysphoria, Hijra simply invented a spiritually surcharged word nirvana for the entire process of gender transformation. Similarly, Gayatri Reddy, in her seminal works on Hyderabadi Hijras, called With Respect to Sex, has given an expansive understanding of the term sannyasi and postulated the idea as how Hijras, many of the Hijras consider themselves as sannyasi. The process of emasculation or nirvana in one way symbolically suggests celibacy, also not having a family, that is supposedly the primary reason for materialistic needs, along with their social activism which centers around egalitarian ethics, makes Hijra contenders for a unique and individualized form of asceticism in a highly imaginative and suggestive fashion. And no wonder Revati's book talks about the sannyasi law. Just briefly summing up. At the cross of this, Gayatri Reddy, quoting Ashish Nandi and Gandhi, talks about the Hijra as God's eunuch, and she says that posited the ability to transcend the man-woman dichotomy through a self-conscious aspiration for androgyny. The desire to become God's eunuch, as he puts it, was superior to both the essence of masculinity and femininity. And no wonder throughout Lakshmi Red Lipstick gives this, use the tool of androgyny to question the stringent idea. So in that end, I will sum up that all over the world there is a tendency in the more marginalized groups within the sexual minorities to break away from the dominant queer language, and no wonder we have the importance of words like Badhai, Kandra, Nirvanam, Danda. They are part of the unique Hijra language, and also the words like Bhashan out of their death ceremonies, Chatla out of their Nirvana ceremonies. So we cannot undermine the importance of that, and certainly it gives a distinct South Asian dimension to the global trans language. Yeah. So I know that this is kind of an academic paper from where you have extracted this. So obviously it requires a more logical explanation of what you are saying. Sorry for the time constraint, but I think we need to have a discussion on it at some other point. Right? Thank you. Shall we go on to the next speaker, please? Manati. Transformation is essential to becoming a writer. So proud of my transformation. Ratnagar Dashu became Valmiki after transformation. Valmiki is the first man of our literature. The main conditions of becoming a writer is transformation. This transformation requires so-called mainstream leaders also. Only then can he or she become a leader of the transgender writer. Being a writer is a destiny. That's true for all transgender men and women.
that there are PhD going around with the transgender writers. PhD get mainstream professor to increment and promotion. I have yet to find a transgender in a high government post who got a job in a civilized, decent government post after disclosing his or her identity. Sahitya Akademi Award is not yet scheduled for transgender writers. Thanks. Thank you. Would you like to speak a little on aesthetics, if you want, in Bangla? And First time I spoke to Chandana. What is the definition of aesthetics? So if you can please. Because no, I want to. I want to hear from you. What is the definition of aesthetics? Yes. What if the French and Gordon answered? No, basically I'll tell you why we use the word aesthetics here. क्योंकि हम अगर लिखने की बात कर रहे हैं, शायद से कहीं हिंदी में हाइट तो नहीं, मेरा भी हाइट नहीं है। सब हाइट वाइड नहीं कर रही बात। कोई हाइट बड़ा हाइट सब चला गया। Sorry to interrupt you between. She want to make you understand on the organization. She has a pain in herself. अभी तक transgender writers को मौका नहीं मिला। So मैं समझ रही हूँ। तो एक ऐसे है ना, तो बात तो सही में होती है। मैं एक आपको क्योंकि मैंने ये यूज़ किया हुआ है, तो I agree that you need to ask me. Polki is going to America through the NGO. I never go to America through the NGO because I do not believe that all the transgender person is the sex worker. क्या हमारा देश में क्या चल रहा है, हमारे कविता है, कविता पढ़ने के लिए मैं लिखा, वो तो अलग अलग कविता करने के लिए लिखा। तो हर ट्रांसजेंडर इधर कैसे डिवीजन में होता है ना, वो सेक्स वर्कर होता है। सेक्स वर्कर क्या इनाम मिलता है, वो कंडम केसेस बनाते हैं, कंडम केसेस बनाते हैं, एनजीओ इससे ही चलते हैं। तो लोग अमेरिका चला जाता है एनजीओ का साथ मिलकर। अब कभी एनजीओ का साथ हमारा इसे सुविध संपर्क नहीं थे, because I always because of an NGO, a university like Harvard, Yale, Cornell, they call me because I'm a writer and an activist. Yeah. No NGO has ever invited me to there. Kalki, you are attached with the NGO also. Sahitya. She runs the organization. Yes, I think let's go to the basic question. The basic question that has been raised by Manvi is important. Let's ask ourselves that question and give an answer to that, right? So Manvi, the reason why we are talking about aesthetics is because you are a writer, right? You are also a writer from so after us. This is considered a writer who is coming from the bottom. Yes. Woman writer, not transgender. Yes. You are a writer. I never consider myself as a writer because I have no awards, I have no recognition. This is my writer. We can deal with this better. Alright. But I just for the sake of everybody, I want to say, I want to tell you why I use the word aesthetics, right? I want to tell you. Because we are recognizing your writing. I am not a transgender, but I want to understand what is transgender writing. And when I want to understand what is transgender writing, I want to know कि आपके लिखने में वो आपकी आवाज मेरे तक क्यों अपील कर रही है? अपील जो कर रहा है, उसमें कुछ ऐसी वेदना है, ऐसी सौंदर्य है, ऐसा लिखने की शक्ति है। वेदना तो है, वाल्मीकि तो कैसे है, वेदना से कहना रत्नाकर का वेदना है, शोक श्लोक बन गया। शोक means the pain recorded in the श्लोक। तो मनोभी ये जैसे सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ हमने दिया कि
ट्रेड में ये भी देख रहे हैं ना, अपील नहीं, राइट्स कौन सा राइट्स आवाज नहीं आता है, तो WRIT राइट्स कहाँ से आता है? तो ये हम सब समझने के लिए पहले ये तो सब कर रहे हैं। RIT राइट्स राइट्स तो बाद में आएंगे, राइट्स तो बाद में आएंगे। हाँ, ताकि हम समझें। तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्पीकर पे जाएंगे। একজন আমাকে একজন ওম্যান একজনের নাম বলুন যে ক্রস বর্ডার থেকে এসেছে, যে মধ্য থেকে এসেছে, পারেন মার্জিনালাইজ করে লেখিকা যে বলবা Can you please mute your our Indian Can we ask the next speaker, please? women writer from the model. It is very true. Sanjana Sanu. আপনি উত্তর দিলেন না, আমি আবার উত্তর দেব। नहीं ठीक कह रहे हैं, हम इसको फिर हम बाद में बात करेंगे। तो बात में तो है, तो आज गांधीवाद है, मार्क्सवाद है, और हमारा सरकार की बात में है। क्या बात हो रही है? मैं तो बर्बाद हो गया। ये चर्चा का विषय है, इससे बात होने वाली है। Go ahead. ये तो आदरणीय श्रीनिवास राव जी, माधव कौशिक जी, कृपया कॉल में आप पहुंचना चाहिए। आपका बिल्कुल नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने हमारी बात को सुनने की जरूरत दिखाई, हम लोग को बुलाया यहाँ पे। दर्द तो बहुत है, लेकिन समाधान ढूंढने का बैठे हैं, इससे समाधान से ज्यादा बात करें। उसी तरफ आगे बढ़ते हुए मैं तब से लिख रही हूँ जब से मैंने जोश संभाला और किसी दोस्त या रिश्ते के अभाव में अपने आप को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात है अभाव, जो हमारे जीवन में मित्र का अभाव होता है, परिवार का अभाव होता है। हमारे जीवन में कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम इस बात से तरसते रहते हैं, कोई सुन तो ले, एटलीस्ट सुन ले। कभी कभी मुझे तो लगता है मैं एक तख्ती लेके खड़ी हो जाऊं और बोलूं कि अपनी बात मुझसे कहिए, मैं सुनने को तैयार हूं। अगर लोग सुनना सीख ले तो हम और अच्छा लिखना शुरू कर दें। पहली बात। दूसरी बात, साहित्य सबके लिए विचारों या भावनाओं की अभिव्यक्ति होगी, पर मेरे लिए लिखना मेरा परम मित्र है। साहित्य की सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्वतंत्र है। यहाँ हर विचार का स्वागत है, यहाँ कोई दोष नहीं लगाता कि अरे तुम लड़के हो, साड़ी क्यों पहन रहे हो, अरे तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, अरे तुमने घर का काम क्यों नहीं किया, तुम मम्मी का आंचल पकड़ के क्यों बैठे हुए हो। ऐसी दकियानूसी बातें या दोष लगाने वाली बातें साहित्य में नहीं। साहित्य में आप सब कुछ बोल सकते हैं। साहित्य के रूप में एक बहुत अच्छा मित्र हमारे पास में है। ये सब्र में है, ये शांत है, ये स्वीकृत करता है। मेरी कहानी उस दौर से शुरू हुई और शायद तब तक चलेगी जब तक मैं अपनी आत्मा की आवाज सुन पा रही हूँ और आवाम तक पहुंचाने की ताकत रखती हूँ। ये मेरे अस्तित्व की आवाज है, ये मेरे जिंदा होने का सबूत है, ये मेरा शौक भी है और अब ये आमदनी का जरिया भी बनता जा रहा है। लिखना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी भी है और एक ट्रांस वुमन होने के नाते मेरा धर्म भी है। ट्रांसजेंडर साहित्य में कुछ खास बात है। नंबर 1, हम लिखते नहीं हैं, हम खुद में एक कहानी है जिसे जितना पढ़ोगे उतना आप लिखना शुरू कर दोगे और जितना आप लिखोगे उतना ही आपको हमें पढ़ने का मन करता जाए। हम अपने आप में अलग अलग कहानियां लेके संसार में पैदा हुए। हम दूसरा पॉइंट है, हम साहित्यकार नहीं, हम योद्धा है, क्योंकि बाप की मार हो या माँ के आत्मघात तंज हो और समाज में अपनों के ताने और मजाक हो, हमारा एक तरफा अधूरा प्रेम हो या मोहब्बत की आड़ में रोज होता हमारा बलात्कार हो, हम जब जब लिखते हैं सत्य को परोसते हैं। थर्ड पॉइंट, हम वो लिखते हैं जो परिवर्तन की मांग होती है। बिल्कुल सही कहा, ट्रांसफॉर्मेशन, जो परिवर्तन की मांग है हम उसको लिखना चाहते हैं, भले वो नंगा हो या भद्दा हो या अस्वीकृत हो, लेकिन वो परिवर्तन है तो हम उसको जरूर से परोसेंगे। फोर्थ पॉइंट, हम किससे कहानियां नहीं लिखते, हम आप बीती लिखते हैं। बेशक हम और लेखकों की तरह कहानियों का सहारा जरूर लेते हैं, पर हमारी कहानियों के किरदारों में हमारी आप बीती कहीं ना कहीं तड़का मारती रहती है। हम आत्मकथा भी उस अंदाज में लिखते हैं कि पढ़ने वाला हमें ही पढ़े पर खुद की पीड़ा और वेदना को हमसे जोड़ सके। हम व्यवहारिक होकर लिखते हैं।
हम लिखते समय तुलनात्मक या आलोचनात्मक नहीं होते, हम सरल, सहज और व्यवहारिक लेखन करते हैं। हम काफिया, अलंकार, विशेषण, नवीन और आकर्षक शब्दों के बंधन में नहीं पड़ते। कुछ दोहा या छंद या मुक्तक बन जाए तो भी लिखते हैं, और ये सब चीजें ना मिले हम तब भी लिखते हैं। हम अपनी कलम को स्वतंत्र करके लिखते हैं। कौन पढ़ेगा, कितनी तारीफ मिलेगी, कितना बड़ा सम्मान मिलेगा, कहाँ कहाँ हम मंचों में हम बुलाए जाएंगे, ये सब हम लोग नहीं सोचते। हम तो आप साहित्यकारों और पाठकों को नए अलंकार, नए रस और दिलचस्प विशेषण देते हैं। ये हो सकता है साहित्यिक दृष्टि में व्याकरण और ज्ञान से थोड़ा अलग हो, जितने समय तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हिंदी साहित्य में या इंग्लिश लिटरेचर में, ये हो सकता है उनसे थोड़ा सा अलग उन मानदंडों से, बट ये प्रयोगवाद से जन्मे भाषा के नए आविष्कार है, जिनके ऊपर मनन, चिंतन और मंथन होना ही चाहिए। हमारे लेखन में प्रायः पीड़ा, प्रेम, अस्तित्व, सपने, सकारात्मक सोच, दिशा निर्देश और धार्मिक लगाव ज्यादा दिखाई पड़ता है। हम सत्य को परोसते हैं। नाट्य शास्त्र के 9 रस हमारे हर कहानी में, कविता में छुपे होते हैं। हम उसके अलावा भी और बहुत सारे रसों को यहाँ पे आज आविष्कार के माध्यम से आप लोगों को सौंप रहे हैं, ये सोच के कि आप साहित्य अकादमी के लोग हैं, आप इसके ऊपर विश्लेषण जरूर करेंगे। दर्द, त्याग, ना चाहते हुए भी उसे जीना जो बर्दाश्त से बाहर है, समाज से संकुचित और दत्यानुसी सोच और इन सबके बीच रोज की मृत्यु का वो रस हम आपको दे रहे हैं, जो हमारी कहानियों में प्रबल तरीके से रहता है। मैं हिंदी भाषा में लिखती हूँ, तो हिंदी साहित्य की विडंबना आपको बताऊंगी। हिंदी साहित्य उत्तर भारत की एक भाषा है, मेन भाषा है। ट्रांसजेंडर और हिजड़ा को लोग एक जैसा समझ लेते हैं। मेरे लिए अभी तक कोई भी हिंदी का शब्द मुझे नहीं मिला है। मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता। हिंदी भाषा इतनी व्यापक है, विस्तृत है, और मैं चैलेंज करती हूँ सभी हिंदी साहित्यकारों को कि मेरे लिए एक शब्द का प्रयोग प्लीज बना दे, क्योंकि मैं हिजड़ा ना माँ के गर्भ से पैदा हुई थी, ना मैंने साड़ी हिजड़ा बन के पहनी, और ना मैं मरूंगी हिजड़ा बन के। मैं एक औरत थी, और अगर मैं ट्रांसफॉर्म होकर औरत बनी हूँ तो कृपया मेरे लिए एक शब्द का निजात करे। जेंडर क्या है मुझे नहीं पता। जेंडर अंग्रेजी भाषा से आगे, लेकिन मेरा हिंदी साहित्य आज भी अपाहिज सा पड़ा हुआ है, बहुत ही कमजोर है, उसको नहीं पता जेंडर क्या है। जेंडर मतलब लैंगिक पहचान नहीं है, क्योंकि मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। मेरा जेंडर स्त्री है, मैं इसको कैसे हिंदी में लिखूं मुझे नहीं पता। तो मेरी भाषा को और परिपक्व होना बहुत जरूरी है। ट्रांसजेंडर और हिजड़ा को एक जैसा समझा जाता है, और हिजड़ों का सत्य उनके डेरे तक ही कैद होता है। जब भी लिखती हूँ तो कहीं ना कहीं उनकी पारंपरिक छवि, धार्मिक सम्मान भी धूमिल होता है। तो ना लिखने के लिए हमें रोका जाता है, हमें डेरे से पाबंदी है कि भाई हम उनकी बातें ना बोले, क्योंकि भाई उनकी बातें एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट जोन में है, हम नहीं बोल सकते, हमें नहीं बोलना चाहिए। उनकी लैंग्वेज को यहाँ पे स्पीकर ने बोला, हम वो लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं कि गुरु भाई क्या होता है, ये सब क्या होता है, क्योंकि उनके अपने मानदंड है, वो हमें आजादी नहीं देती है, उनकी लीगल कोड वर्डिंग है, हम उसको नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे हिंदी साहित्य में कमजोर पड़ जाता है, हम कैसे परोसे अपने जज्बातों को। इंग्लिश में लिखना आसान है, क्योंकि खुद को ट्रांसजेंडर कहना बहुत सहज है। मैं 1 लाख लोगों के बीच में खड़े होकर कह सकती हूँ आई एम प्राउड ट्रांस वुमन, लेकिन मैं एक इंसान के बीच में भी ये नहीं कह सकती कि मैं एक गर्वान्वित हिजड़ा हूँ, क्योंकि मैं हिजड़ा नहीं हूँ। सहज है, और हिजड़ा एक टैबू शब्द है, उत्तर भारत में धरती और गाली के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है। कोई बच्चा जब पोती और मूरत बन के चलता है तो लड़के उसको ताली बजा के बोलते हैं अरे हिजड़ा आ गया, भले वो हिजड़ा ना भी हो, तब हिजड़ा करार दिया जाता है। तो ये विडंबना है हिंदी भाषा की, और मेरा दर्द है कि मैं किस तरीके से अपने आप को सहज भाषा में, सम्मान की भाषा में अपने आप को व्यक्त कर सकूं। उत्तर भारत के रहने वाले, उत्तर भारत के लिए बात कर रही हूँ। आप प्लीज उन शब्दों के ऊपर बोध करें जो कि हमें इज्जत का बोध कराए, और साथ ही साथ में जैसा कि मनोजी जी ने भी कहा और कल्टी जी ने भी कहा, रेवती मैडम ने भी कहा कि देखिए जो सम्मान होता है साहित्य का, वो हमें मोटिवेशन देता है। तो बेशक कि मेरी बहनें जो है वो सभी बहनें यूनिवर्सिटीज नहीं पहुंची है, सब लोगों ने अलंकार और विशेषण और फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ी है, उनको नहीं पता तुलसी कौन है और शेक्सपियर कौन है। उनको ये पता है कि सिग्नल में खड़े होकर जब 10 रुपए मांग रही हूँ तो कार वाला 10 रुपए के पीछे
के लिए अपने पीछे भगा रहा है और एक कोने में जाके गाय को रोकता है और 10 की जगह 100 का नोट देता है, लेकिन कहाँ छूटा है ये बताते हुए या लिखते हुए ट्रांसजेंडर की रूह कांप जाती है। अगर रेप की सजा मौत है तो हिजड़े का जब रेप होता है तो 100 बार मौत मिलनी चाहिए उस इंसान को। वो इतना दर्दनाक है कि मैं उसको परोस भी नहीं सकती साहित्य में। तो ये साहित्य की विडंबना है और इसी के ऊपर शायद हमें और विमर्श करना चाहिए कि कुछ अच्छे शब्दों को हम लेके आए, कुछ अच्छे अलंकारों को लेके आए, ताकि हमारा साहित्य भी। थैंक यू वेरी मच। आपने तो कहा कहीं यही एस्थेटिक्स है, यही इसी को एस्थेटिक्स कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस शब्दों को भी शेप दे, है ना। और अगर आप अपनी राइटिंग में वो शब्द लाएंगे तो अपने आप क्रिटिक्स को भी उठाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए एस्थेटिक्स की जो फिलॉसफी है आपकी राइटिंग से क्या उभर के आ रहा है, वो जो एक्सपीरियंस अनुभूति जो आ रही है वो अनुभूति इसीलिए आ रही है क्योंकि उसका आपने एक्सप्रेशन किया है ना। तो वो जब एक्सप्रेशन जो है उसको डाइसेक्ट करते हुए जब रीडर क्रिटिक स्कॉलर जब उसको देखेगा तो उसी को एस्थेटिक्स कहते हैं, ठीक है। सेंस ऑफ ब्यूटी का आ रही है और वो उसमें जो आपकी मांग है वो बहुत ही सहज और सही है। वो मांग ये है कि शब्दों का निर्माण किया जाए ताकि आपकी रियलिटी वो शब्दों को मैच करे और वो मैच किया जाए और स्टिग्मा ना लगे। अब हमारा जो अगला है वो उसी के बारे में है। ना करें लेकिन वो समझे तो अभी अगला वाला जो है हमारा सत्र जो है वो 4-5 और ट्रांसजेंडर राइटर्स को इनवाइट करेंगे और इसमें सत्र क्योंकि हमने तो आपको सुनना है एक के बारे में। अगला शुरू करते हैं। अगला है हमारा टाइटल जो है Shall we start the next Alright, so shall we go on to the next part of the first session, which is transgender लेखन के लिए महत्वपूर्ण अनुरचनात्मक कदमों का विकास। इंग्लिश में इसका है evolving critical tools for transgender living। तो ये tools उसी में से निकलेंगे जो आप बोल रहे हो। इसमें सबसे पहले हम writing और writing को समझ करते हैं और आप बोलिएगा वही अपने 5-6 मिनट के अंदर। थैंक यू मैम मुझे मंच देने के लिए। I'm going to present my essay on evolving critical tools in transgender literature, pronoun usage, and androgynous elements. Transgender literature is a vital part of the literary landscape, allowing authors to express the diverse experiences of transgender individuals while challenging societal norms and promoting inclusivity. I'm exploring the evolving critical tools that can be used in transgender literature writing, focusing on pronoun usage and androgynous elements in writing. Furthermore, it delves into personal journey of the author, that being who uses pronouns such as he, she and they, which have evolved over time with transitioning phases, and how critics interpret the author's work as an androgynous transgender writer. Pronouns are linguistic tools that play a profound role in shaping one's identity. For transgender individuals, pronoun usage is a way to express their gender identity authentically. My use of pronouns as he, she and they reflects the journey and complexities of my identity since my childhood. Pronouns are not static, they can change as individuals evolve and they navigate different phases of transitioning. As the author grows older and gains a deeper understanding of their identity, pronoun usage naturally adapts to reflect this growth. Pronoun usage is a dynamic aspect of the transgender experience. Initially, an individual may use pronouns that align with their assigned gender at birth.
As they come to terms with their true identity and begin transitioning, pronoun may shift. The use of pronouns like he, she, or they becomes a powerful tool for self-expression. Critics must recognize this evolution in pronoun usage and respect the author's choice as an essential aspect of their identity. Now, fluidity. Some transgender writers may use a combination of pronouns, switching between he, she and they, depending on their mood, situation, or the content of their writing. This fluidity reflects the nuanced nature of gender identity and allows writers to capture the complexities of their experiences. For example, a character in a novel may transition from using he to they as part of the character's development, mirroring the author's own journey. Intersectionality in pronouns. Usage can intersect with other aspects of individuals such as rare ethnicity or sexual orientation, making the evolving use of pronouns a rich and complex tool for conveying international experiences in literature. Now, impact on readers' perception. The choice of pronouns in a writer's work can profoundly impact how readers perceive characters and themes. It can humanize the gender experience and create impact leading to a better understanding of the complexities of gender identity. Androgynous elements in writing are techniques that challenge traditional gender norms in binary structures. The elements create a space for gender non-conforming. It's a very important point what I want to convey. These elements create a space for gender non-conforming and transgender authors to express their experiences in literature. The author's writing incorporates androgynous elements that blur the lines of gender, allowing readers to engage with characters and themes that transcend traditional gender expectations. This reflects the fluid nature of gender and identity, highlighting the importance of acknowledging and respecting these shifts. Critics' interpretation of androgynous transgender literature. Critics play a pivotal role in analyzing and evaluating transgender literature, particularly that of androgynous transgender writers like me. They should approach these works with sensitivity and an understanding of the evolving nature of pronoun usage and androgynous elements as they may shift quickly. The key is to appreciate the complexity of the author's identity and the intentions behind their writing. Critics should not impose rigid gender expectations on the author's work, but rather celebrate the richness and aesthetics of diversity in gender expression and identity. They can explore the thematic depth of these works, examining how androgynous elements contribute to the narrative's power and message. Critics must recognize that transgender literature often serves as a catalyst for social change, challenging traditional norms and promoting inclusivity. I'm summing up now. Transgender literature is a vibrant and evolving field that incorporates critical tools like pronoun usage and androgynous elements. For authors who use pronouns that change over time, transitioning phases and androgynous elements, their work reflect a dynamic and authentic expression of their identity. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Extremely pertinent. Very, very pertinent. नहीं वो पढ़ी आप थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए हाँ, मैंने ये कहा कि मैं एक ट्रांसजेंडर जैसे एंड्रोजिनस ट्रांसजेंडर राइटर हूँ, तो मैं इस पर बात करूँगा कि जो हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं खुद ही, शी और दे यूज़ करता हूँ, तो वो मूड पर भी डिपेंड होता है, मेरी सिचुएशंस पर भी डिपेंड होता है। जैसे मेरे घर में मैं माँ के साथ होता हूँ, तो अभी तक चूंकि मेरा ट्रांजिशनिंग नहीं हो सका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से और पैसों की कमी की वजह से, तो अब मैं 50 साल की उम्र का होने वाला हूँ, लेकिन अभी भी होने वाला हूँ, जाऊंगा, खाऊंगा माँ के सामने। लेकिन जब मैं अपनी बहनों के सामने अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जाता हूँ, तो वहाँ मैं एक औरत जैसा बोलने लगती हूँ, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो मैं बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाती हूँ। कम्युनिटी में मैं होती हूँ और घर में मैं होता हूँ, तो ये मेरी राइटिंग में भी आता है। और क्रिटिक्स को ये समझना चाहिए कि हम इस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात, ये तो हुई मेरी बात, एक सामान्य बात जो हमने आमतौर पर हमारी कम्युनिटी में देखी है
कि हम पैदा जैसे भी होते हो, चाहे बायोलॉजिकली मेल चाहे बायोलॉजिकली फीमेल, उसके बाद जब हम इवॉल्व होते हैं, डिस्कवर कर रहे होते हैं अपने जेंडर आइडेंटिटी को, एक्सप्रेशन को, और फिर जब हम जाके आगे कॉन्क्रेटाइज करते हैं उसे, तब फिर ये जो शिफ्ट होता है ही से शी का या दे का, उस बारे में मैंने इस राइटर में पूरा कहा है। थैंक यू। Freedom of choice. And therefore pronouns. फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये आपका चॉइस है, हाँ, तो चॉइस नहीं, ये हमारा सवाल, ये हमारा अंतर्गत होगा, चॉइस नहीं, ये हमारा टैटूज नहीं, ये हमारा सोल है। मराठी में जो हमारा तो सबसे पहले तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि लेखक बहुत बार साइंटिस्ट की भूमिका में चला जाता है, और वो जैसे साइंटिस्ट कोई चीज़ बनता है तो पहले चूहे के ऊपर ट्राई करता है और कुत्तों के ऊपर ट्राई करता है। तो राइटर भी बहुत बार क्या होता है कि एक नए टॉपिक की खोज में जो लोग अनुभूतिकार होते हैं, जो उन चीज़ों को सर्वाइव कर रहे हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर उनको रिसर्च का मटेरियल समझते हैं, तो हमें उससे थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। लिखने की जो कला है, जब इंसान पहले चित्रों में लिखने लगा, मूर्तियों में लिखने लगा, उसकी उदय के बाद आज हजारों सालों के बाद ट्रांसजेंडर्स की लिखने की बात करें तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं इन सारी चीज़ों, हमें बहुत फास्टली पिकअप लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये, मेरा तो सौंदर्य शास्त्र के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ये किसने लिखा? तो ये जिसने लिखा उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो आज सर्वकष और सर्वसमावेशक सौंदर्य शास्त्र की रचना की जरूरत है पूरे देश को या पूरी दुनिया को। तो इसके ऊपर मैं आपको लाना चाहूंगी, और जब सर्वकष और सर्वसमावेशक सौंदर्य शास्त्र की रचना होगी तो सौंदर्य की परिभाषा बदलेगी। हाँ, क्योंकि जब सौंदर्य शास्त्र लिखा गया तब काले को बुरा माना गया, गोरे को अच्छा माना गया। अब फिगर मेंटेन है तो उसे सुंदर कहा गया, और मोटी है तो उसे मोटा कहा गया। तो आज अगर हम उसे पुनर्रचित करें तो उसकी परिभाषा कुछ अलग होगी। तो उसी के साथ में दुनिया भर में भाषा को न्यूट्रल बनाने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ा में कहीं पर जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ जाने वाली कोई कोशिश दिखाई नहीं दे रही। हाँ, तो ये कोशिश होना बहुत जरूरी है कि हम आज तक जो बायस वर्ड इस्तेमाल करते थे उनको हम निकाल देंगे और उसकी जगह पर न्यूट्रल वर्ड लाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ देवताएं हैं, सटवाई नाम की मराठी देवता है, जो कहा जाता है कि जब आप पैदा होते हैं तो 5 दिन के बाद में वो आकर आपकी किस्मत लिख के जाती है और वो आपकी पूरा आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन जब औरतों की लड़ाई होती है तो एक औरत दूसरी औरत को बोलती है सटवे, किसी देवता के नाम से गाली दी जाती है। भवानी की हम पूजा करते हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है औरतों में तो हमारी मराठी और दूसरी औरत को होती है भवानी चुप कर। तो ये जो गाली हुई है महिलाओं की सशक्तिकरण की जो गाली हुई वर्ड अरेबियन वर्ड है, और जो समाज से बाहर निकलकर जिन्होंने खुद की राह चुनी है वो हिजड़े हैं, और उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि वो गाली उसको ही गाली बन गया। तो हमें इन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसी के साथ में सौंदर्य की व्याख्या पुरुषों के एंगल से ज्यादा लिखी गई, क्योंकि लिखने का हक और एंगल उन्हीं के पास में। नाट्य शास्त्र की रचयिता पुरुष है, रामायण की रचयिता पुरुष है, महाभारत के रचयिता पुरुष है, और बाकी जो धर्म ग्रंथ है पुराण बाइबल सबके रचयिता पुरुष है। तो स्त्री केंद्रित या फिर मनुष्य केंद्रित साहित्य की रचना ही नहीं हुई। वो हुई होगी, अभी थोड़ा बहुत लिख रहे लोग, तो होनी जरूरी है। उसी के साथ में मराठी में अभी हमारे पास एक प्रैक्टिस हुआ है कि हमने पत्रकारों के लिए मराठी की एक डिक्शनरी बनाई कि क्या वर्ड इस्तेमाल करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए।
उसका एक एनजीओ ही वो खुराका दिया और वो काम किया है। तो उसमें वो डिक्शनरी बनी पत्रकारों के लिए, जिसमें हम हिजड़ा की अलावा पारलिंगी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मराठी, हिंदी में नहीं पता मुझे क्या है इसका। तो रूपकों की भाषा बदलनी चाहिए। मेरे लिए जैसे हमारे यहाँ पर उसने लिखा कि संत नामदेव तुकाराम महाराज के जाने के बाद में मराठी भाषा विधवा हो चुकी थी, और उसको नामदेव ढसाल ने आकर स्वागत बनाया, स्वागत बनाया। तो विधवा होना जो आप सबको भी मान रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। फिर मैंने कहा कि मैंने नामदेव ढसाल के ऊपर ही लिखा, मैंने कहा कि तुकाराम नामदेव ढसाल के लोगों ने सर पे पल्लू देकर एक मराठी भाषा को सो कॉल्ड प्रमाण लोगों के हाथ में देकर उसको घर में बंदिश किया था। नामदेव ढसाल ने आकर उसके पैर की बेड़ियां तोड़ी, उसको बाहर लाया और उसको आवारा बनाया। तो आवारा बनना या छिनाल बनना बुरा नहीं, तो रूपकों की भाषा को भी हमें बदलना पड़ेगा। सॉरी, मैं करने की कोशिश करूंगी। तो उसमें और एक महत्वपूर्ण है कि हम लोग जिस चीज को अच्छा कह रहे हैं वो ही अच्छा है, ये गारंटी क्या है? आदिवासी झरनों का पानी पीता है और हम बिस्लरी का पी रहे हैं, तो नहीं, इसे हमने अच्छा कह के इसकी आदत लगा ली, और जो निसर्ग नेचर से कोई खिलवाड़ ना करते हुए बहता पानी पी रहा है उसको हम ई आ करना चालू कर दिया। तो आज जो हिजड़ों की संस्कृति और कल्चर है, मैं 10 साल पहले साड़ी को फिर नहीं निकालती, लगाती नहीं। अब सोकड़ लोगों में आके बैठना पड़ता है तो फिर लगानी पड़ती तो क्योंकि वहां पर मेरे स्तन का दिखना दिखावा असभ्य माना जाता है, और एक तरफ मेरी आदिवासी महिला नदी पर 100-200 लोगों के सामने पूरे कपड़े उतार के नहाती, उसकी तरफ कोई गंदी नजर से नहीं देखता। तो इसमें पॉइंट है, ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात कह रही है। तो आप इसे विभत्स कहोगे। मैं यहाँ इसलिए इंटरव्यू कर रही हूँ, यही कहने के लिए, क्योंकि ये बातें हो रही है, बदलाव की जो बात है अभी, उसको रिकॉग्नाइज करना और इस फोरम में करना बड़ा अहम रखता है। इसलिए क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं कि स्टिग्मा किसको है, बायस क्या है और कैसे उसमें से निकलना है, और देयरफॉर जो एस्थेटिक्स की बात कर रहे हैं वो बदलना कैसे, वो बदलाव इसी तरीके से आ रहा है। बदलाव इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी आप बात कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं ना, तो समझ रहे हैं भाषा जो आपके बदल में विभत्सता है वो मेरे लिए मेरी जीवन शैली। हाँ, तो मुझे तो एक सिनारी इधर आप बोले से मुझे सही नहीं आ रहा, वो अंदर से प्यार मोहब्बत से आया हुआ है, वो गाली की तरह से नहीं आया हुआ है। तो हम हमारी जीने की शैली को आप शक्कर डालकर मीठा बनाओगे, इसका मतलब अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। हमारा जो है नेचुरल बेस है उसी को वैसा, और मैं इसको 3 भाग में बांटना चाहती हूँ। लेखकों की जिम्मेदारी है, मैं जो लिख रही हूँ मैं जो लिख रही हूँ तो मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं कोई ब्रेकअप वाली मेरी फ्रेंड है, उसका अगर पोएट्री में लिख रही है उसका ब्रेकअप, तो मैं सिर्फ माध्यम हूँ, अनुभूतिकार कोई और है। तो राइटर ने ये ध्यान रखना चाहिए, अनुभूतिकार जो होता है वो ज्ञान उत्पादक होता है, ज्ञान उत्पादक, ज्ञान संपादक और ज्ञान टंक लेखक, ये 3 अलग कक्षाएं हैं, और हमें इसमें राइटिंग को विभाजित करना पड़ेगा। हिजड़ों की कहानियां लिखना, हिजड़ों ने कहानियां लिखना और हिजड़ों ने कहानियां बताना, ये अलग चीजें हैं, और तीनों का भी वही वैल्यू है, वो कम नहीं होना चाहिए। तो सॉरी मैं वक्त दे रही हूँ, इसकी 2-3 उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। एक दिशा नाम का नाटक लिखा गया मराठी में, और मेरे यूट्यूब के सारे डायलॉग्स उन्होंने वैसे तो उसे कॉपी पेस्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर दिया। नाटक के राइटर बने दूसरे कोई और, हाँ सब डायलॉग, एक वाक्य का कॉमा का डॉट का किसकी का फर्क नहीं। दूसरा एक अभी और एक बताती हूँ, एक बहुत बड़ा नाम है पीयूष सक्सेना, यूनक नाम की किताब लिखी है उन्होंने, उसमें कम्युनिटी की इंटरनल बातों को उन्होंने एक्सपोज किया है सो कॉल्ड, लेकिन उस जिनको वो एक्सपोज करे उनका कंसर्ट नहीं, उनके फोटो छाप दिए,
ट्रांसजेंडर्स के प्राइवेट पार्ट्स के फोटो छाप दिए उसमें, हाँ, तो कितना सोना पहनते हैं, कितनों को लूटते हैं, निगेटिवली उनको रिप्रेजेंट किया, उनका कल्चर नहीं मालूम, उनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कुछ भी बैकग्राउंड नहीं उसमें। तो इस तरीके का हमें अलर्ट होना पड़ेगा कि हम गलत ज्ञान तो नहीं दे रहे। तो हिरण का इतिहास जब तक हिरण नहीं लिखेगी उसमें तब तक शिकारियों की शौर्य गाथा लिखी जाएगी। मैंने कहा तो भी पढ़ा था, तो अभी हिरण लिख रहे थे, हिरण को लिखने दो, उसको सपोर्ट करो। उसके साथ में आलोचना, हाँ वो कवर करके मैंने, आलोचना यानी प्रमाण बनाना नहीं होता है। अपनी भाषा को जो उसकी रॉ मटेरियल है उसको और व्याकरण को बदलना पड़ेगा। व्याकरण को आम लोगों को साहित्य किस लिए, अगर परिवर्तन चाहता है साहित्य तो साहित्य को बदलना पड़ेगा। आज हम जो भाषा बोल रहे हैं 100 साल पहले ये भाषा नहीं, 500 साल पहले ये भाषा नहीं थी। भाषा तो मरना ही है लेकिन अपग्रेड होके मरना है। जब ये भाषा मरेगी तब अपग्रेड भाषा उसकी जगह लेगी। तो बस थैंक यू सो मच। ये भी बदलाव तो है हमारे आना जरूरी है। सॉरी डॉक्टर पॉल, सॉरी टू इंटरप्ट यू बिटवीन। जैसा कि दिशा सेठ जी ने बोला और यहाँ पे जो और साहित्यकार बैठे हैं, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ हिजड़ा गालिए। हमारा कल्चर में मैं आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ ए हिजड़ा पर्सन। अगर मैं हिजड़ा कम्युनिटी की बात करती हूँ, आई थिंक मैं बहुत लाउड बोल सकती हूँ ऑनलाइन वालों को, चलिए ठीक है। तो अगर मैं हिजड़ा कम्युनिटी की बात करती हूँ तो दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस कि आप हिजड़ा को एक शब्द गाली की तरह ले रहे हैं। अगर इफ यू कैन टॉक अबाउट द लिटरेचर पर्सपेक्टिव से बात करें, हिजड़ा इज मींस ईरानी लैंग्वेज हिज्र, which is unique, which is different, which is something new, something creative और very close to the Almighty, जो ईश्वर से बहुत क्लोज है। अब मैंने अपने शब्दों में उसे हिजड़ा बोल दिया, मैंने अपने शब्दों में उसको हिजड़ा बोल दिया, मैंने अपने शब्दों को हिज्र बोल दिया। दिस इज माई चॉइस, ये मेरा फ्रीडम ऑफ माई चॉइस है, जो भी मैडम बात कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी शास्त्र को हम लोप करने वाले होते, क्योंकि कहावत है, दिशा दीदी मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि साहित्य जितना पुराना होता है उसका रस उतना ही अनोखा होता है। राम जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा या तुलसीदास जी ने लिखा तो सबके टेस्ट और जो लिखने की शैली थी वो भिन्न थी, भाषा भिन्न थी। और आज भी हमारे हिजड़ा कल्चर में एक हिजड़ा पर्सन जो होता है, गुरु की जो बात अभी कर रहे हैं, वो जब आपस में दे स्टार्टेड कन्वर्सेशन और जब भी वो कुछ बातें करते हैं, जब भी वो कोई कलाम करते हैं व्हिच इज हिजड़ा लैंग्वेज, दे सेड कि ये हिजड़ों की बात है और तू हिजड़ा नहीं है क्या, यानी अगर हिजड़ा है तो हिजड़ों की तरह चले। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हम चीजों को लोप ना करें, चीजों को बिल्कुल खत्म ना करें, और जो पर्सपेक्टिव बने हुए आपको पूरा आजादी है अपनी तरफ से जो लिखना है, बट जो हमारा साहित्यिक पर्सपेक्टिव से पुराने जो नीति नियम बने हुए हैं उनको हमें फॉलो करना और उस साहित्य को फॉलो करना, उसके साथ चलना बहुत जरूरी है। और मेरे लिए आई डोंट कंसीडर कि हिजड़ा कोई गाली है, या आई डोंट फील कि हिजड़ा इज अ शब्द, और जो कुछ भी शब्द है वो लोगों के लिए होगा गाली, हमारे लिए नहीं। तो मुझे लगता है आज भी जो ओल्डेस्ट से ओल्डेस्ट, मुझे लगता है सबसे पुराना सिविलाइजेशन की हम बात करें, दैट्स द हिजड़ा कल्चर। तो आई थिंक दैट हमें ये कंसीडर करके हमें नए अनुसंधान करने हैं और प्रयोग करने हैं जिससे धार्मिक भावनाएं और किसी समुदाय विशेष के साहित्य पे फर्क ना पड़े। थैंक यू सो मच। डायलॉग नहीं, मैं चीजें करती और आगे लेके जा सकता हूँ। एक मामन दादा कर्डनपुर के अम्बेडकर राइट के बहुत बड़े शायर हैं और उन्होंने अम्बेडकर राइट मूवमेंट में बहुत गाने लिखे हैं। उनके गाने का एक मुखड़ा था जिसमें उन्होंने कहा कि नेते हमसे अड़कले बाया बुगड़न मदी गो। इसका मतलब होता है कि जो हमारे नेता है वो औरतों के चक्कर में अटक गया, ऐसा लगता। लेकिन उन्होंने जो गाना जब लिखा था और उनका जो जेंडर पर्सपेक्टिव था वो उसमें आया है, लेकिन अभी की जो युवा पीढ़ी है उन्होंने उस वाक्य को बदल दिया। उन्होंने गाना वही रखा लेकिन उसका जो पर्सपेक्टिव है वो बदल गया। तो हम हिजड़ा तो गाली है ही नहीं, मैं तो खुद बोलती हूँ मैं हिजड़ा हूँ, कल्चर इसका हो, लेकिन
हमें उन चीजों को बदलना पड़ेगा जिनका पर्सपेक्टिव हमें थॉट्स बदलना है, साहित्य नहीं बदलना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज लेट्स नॉट इंटरप्ट, बिकॉज़ ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 3-4 और स्पीकर्स हैं, डोंट वांट देम नॉट टू स्पीक, राइट? बट एक चीज़ मैं यहाँ पे इंटरव्यू करना चाहूँगी और वो ये है कि जो आप कह रहे हैं ये चीज़ हमें भी अपना दिमाग बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक हम बार बार कहते हैं ना वेस्ट का जो अगली शेडो है वो सही बात है, लेकिन वेस्ट में एक फिलोसॉफिकल अप्रोच था जिसको हमें इस आपके कहने पर मुझे याद आया, वो है फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। अब जो आपने कहा हिजड़ा वाली बात बहुत अहम है, क्योंकि हिजड़ा कहते ही एकदम नेगेटिव आ जाता है ना सारा, तो वो फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच है ही ये कि शब्दों को दोबारा फ्रेश दें और कॉन्सेप्ट भी बदलेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बदलेगी, लेकिन उसको देखने के लिए आपका कॉन्टेक्स्ट चाहिए। वो कॉन्टेक्स्ट के लिए एक टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट जो है जो हम देख रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। समाज में हमें भी रहेगा और वो क्रांति रहेगा, वो सब साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग में डेफिनेटली परसेप्शन, अगर इस क्राउड में 2-3 लोग भी बदल जाते हैं, अब जरा प्लीज एक 2-3 चीजें हमें ये रखना पड़ेगा अपने पॉकेट में, समझ आनी चाहिए कि हमारे इस गैदरिंग में 2 या 3 लाइन्स भी अगर जरा सा इस पे सोचना शुरू कर देंगे ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर राइटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर पीपल हु आर सिविल पीपल लाइक मी, अगर हम 2-3 लोग भी इसमें सोचना शुरू कर देंगे तो जो सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम राइटिंग है उसमें एक इंजेक्शन तो लगेगा। We need to think about it. We need to थोड़ा हिलना पड़ेगा ना। मैं तो झूठ रही हूँ। What I heard from Disha, what I heard from you, तो अंदर से कुछ शेकअप हुआ है ना। आमतौर पर नहीं सुन रहे, तो जब सुन रहे हैं तो हम लोग जो थोड़ी एज की वजह से या पावर पोजीशन, कोई लोग पावर में है, कोई लोग एज का तजुर्बे से है, तो हमारे अंदर बदलाव आएगा, तो कुछ बदलाव आगे भी जाएगा, जरूर जाएगा। पूरी बॉडी नहीं ये हम स्टेट है, इसकी पर्सनालिटी ऑलवेज ट्रांसफॉर्मेशन है, अपने नाम जैसा है नहीं वो सर इसी में इसकी पर्सनालिटी ऑलवेज बहुत चेंज है। We have to travel now to Northeast. Again. Next time, can we meet where you are? We'll come there. I don't know. I'm not a very loud person, so my brain is crowded with so many things. As I have come from a very conflicted state, where 70,000 people were internally displaced, for more than 4,000 plus houses were burned into ground, made ashes. So there is the two community between Meiteis and Kukis. The two communities are deeply polarized, and we are very much into this higher dichotomy of who are the victim and perpetrator. And for me to sit here and telling me to talk about evolving critical tools for transgender writing is something which I find myself very difficult to talk more deeper and also more accurate about this topic. But I'll try my level best to stick around this topic. And like what my sister Malovika who is my fan, and I have been following her for a very long time. She has a lot of truth, big truth, whether the society wants to listen to her or not. I being a transgender person, I can easily relate to what she said. Evolving critical tools for transgender people, as I have said earlier when we had this personal communication, I always focus on trans economics.
Literacy is something which is trying to convey social justice and equalities and also the rights for the peoples who we are attempting to work along with. So I feel like Sahitya Akademi, in order to make the community encouraged to deep dive into exploring the critical tools to bring out more good writings from the community, and is to recognize them, like giving awards from Sahitya Akademi to a few transgender writers, which I feel is very important. And the other thing is like people are very much having this anxiety of language disparity, like the gender neutral, the cultural, social background, political environment that we have come from, where it belongs to. For example, in Manipur, the language that we speak is gender neutral language. So how do I locate a gender, non-binary gender in my story? I cannot use the word they, because they is a plural gender, pronoun in Manipuri language. When translated, it will take away the literature values of the person that I am going to project in the story. So, like we have this, in order to represent men and women, we use name only. If they say Toibi, then it's a female, and it is Tomba, then it's a male. So, like all the transgender person has this male name, and we even now also many of the transgender people call within the community also call ourselves as Dada, that means Big Brother. So like Big Brother, even though we call this person, the senior trans person as Dada, she lived as a woman in her daily life. And the term that we address to this person, the person accepted their term. Okay, it doesn't mean that this is misgendering or the mispronouncing the person. As long as the person accepts the term that's addressed to him or her, it's, according to me, it's very much okay. And we need to recognize this reality also. And few of the transgender people today also talks about the trans diversity. Trans is a very complex and diverse community. And we cannot homogenize through our writings. Like for example, I'm not blaming the Eurocentric or the West literature, but to some extent we also need to understand, like, because our gender expression is also somehow related to our environment experiences. Like for example, the dress that I'm wearing today is the influence that I have received from my mother. My mother figure, where since my childhood I have seen my mothers wearing this dress in many occasions, and then how she carry with a lot of powers, and this is not just a piece of cloth, it carries a lot of stories. And how do we reflect this in this transgender writings, and then how do we convince or else how do we make the audience to understand all this diversity? So here, I think from Sahitya Akademi ends, there is a lot of work to do. The Sahitya Akademi needs a lot of work to do. Like I also wanted to focus on the support that Sahitya Akademi can possibly provide to the transgender movement, like in terms of reservation, because it's a very big institution, and along with this initiative to include transgender and the formation of transgender in the literature, at the parallelly, Sahitya Akademi authority can also support the community in the movement so that we would be able to stick into our writing, and we will be more productive, because writing requires a lot of emotion. You just cannot take a pen and write everything. And many of the transgender writing is very raw. We don't follow any methodology. So the question is like whether we should follow the conventional methodology which is already ready-made there, or else the literature need to change and immerse into the transgender methodology, what we write. So that this will help the Sahitya Akademi to bring out a new methodology from the grassroots level. Yeah. So these are the things which I feel at the moment. I don't know whether Inshallah, you tell transgender literature is very raw. Which change
Raw. Raw meaning Didi, it's like when we write, you know, in the many of the traditional writers like you did Arundhati Roy or you know Chetan Bhagat, whosoever, even your Bengali writers, even Rabindra Tagore, they are very much into. If I may intervene, I think her question is right. Even I stopped there, and she said when you said raw, because I think what you said to me appeals more, which is that whatever you are writing, it comes out of your heart and pain and anguish and rage and anger and everything. That itself has its own methodology. Yeah. Its own methodology. And that needs to be, and that is what that needs to be recognized. And that needs needs to be recognized. And there is here what you are saying, we are recording this and I want to publish this, right? If you publish it, then obviously people are going to say, oh, is it like this? So what is this? So then it won't be termed as raw, it will be something new, something different, not new but different. You are the water of God now. Yes. As I said, I'm not taking long time, I won't be taking long time, but I just wanted to flag out very important point here about, you know, going back to the Northeast, because you know, like Northeast being a very conflict-ridden zone, because like in this case it's very low as compared with 10 years back. So now I wish that the Akademi also take on certain initiatives to do such kind of workshop, you know, symposium in the region so that we'll be able to have people. That's why I was saying, oh, we will do something there. I'm going to push for it. Because I think that area is, we are not engaging adequately. If we engage with literature, and of the literature that we are talking about, which is created out of the art, out of, you know, I think that is the literature we need to confront and realize the value of it and therefore its own sense of beauty. What is the beauty? Like in Dalit literature, the ugly is beautiful. Why is it beautiful? Because the ugly is showcased in truthful fashion. That truth has to be recognized as beautiful because there is authenticity. Exactly. That is the point. So that is why my understanding of aesthetics. That is my understanding of sense of beauty. And that one thing more like factor classes में जो एक टेबल पे जो भी हमारे यूनिट्स हैं, इंग्लिश हैं, तो वहाँ से लैंग्वेजेस के लिए भी काम होना चाहिए. जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट छूटा हुआ है, तो फिर नॉर्थ इंडियन छूटा हुआ है. कुछ हिंदी भाषा में ट्रांसलेटर कौन राइटर है? देखो, ये हो रहा है कन्वेंशनल बेसिस. हो रहा है. नॉर्थ ईस्ट का मतलब ब्रांड मिल गई, उधर जाके कर दिया. If you talk about Uttar Pradesh, then Devika and me only. Only then we have to move to other sense that this is a later discussion. I think it is important to move on. So we will go to the other speakers now, but these are well taken points. We need to look into all these points that are being raised. That is why the session. So let's not miss out on. Okay, now we have Shivansh Thakur. Go ahead. मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ साहित्य अकादमी को, जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने अपनी बातें रखता हूँ. पता नहीं मैं इस तरीके के लायक हूँ या नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी बात है. और दूसरी बात मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि बार बार मैं कॉल करके परेशान कर रहा था कि मुझे ये नाम समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए. तो मैं बड़ा कवि तो नहीं हूँ और ऐसा बहुत बड़ा फील भी मैंने मारा नहीं है, लेकिन इतना ही बोलूँगा कि जो मेरे दिल में आता है, चाहे वो तकलीफ हो चाहे वो खुशी हो, मैं कलम के जरिए पन्ने में उतार देता हूँ. और एक ऐसा दौर था मेरी ज़िंदगी में जब बहुत सारी चीज़ें अंदर थी, मेरे बहुत हलचल थी मेरे अंदर, और चाहकर भी मैं किसी को बोल नहीं पाता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं बोलूँगा तो सामने से पागल करार कर दिया जाऊँगा या फिर बीमार करार कर दिया जाऊँगा. तो उस समय पे बहुत अच्छा जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो ये कलम थी.
मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं अपनी तकलीफ को, अपनी खुशी को जब मैं उसमें लिख रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि मेरा 20 से कहीं ना कहीं वो तकलीफ 19 हो रही है, थोड़ी सी कम होती थी। तो मैं अच्छा लिखता हूँ, बुरा लिखता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन तभी से मैंने लिखना शुरू किया। और मैं साहित्य के बारे में इतना ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा जो छोटे छोटे जो ख्वाब हैं, मेरे जो सपने हैं, मेरी जो तकलीफ है, वो साहित्यकार के सामने अगर मैं रखूँगा तो उनका विचार होगा, उनको अच्छे से समझा जाएगा। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कवि हो, लेखक हो, वो हर किसी के अंदर होता है। और अभी मैं सबके मुँह से सुन रहा था कि जब इंसान सुनता है हमको और जब उनको पता चलता है कि सामने वाला ट्रांसजेंडर है, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जैसे कि आजाद ने बोला। तो वो इंटरेस्ट ही नहीं था सुनने में। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, मैं बहुत आशावादी हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इंसान ढूंढेगा कि बोलने वाला एक ट्रांसजेंडर हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे ख्याल आ रहा है कि वहाँ पे कुछ है ऐसा, तो मैं उस पर लिखने लगा। मैं किसी को देख रहा हूँ, मुझे इश्क हो ही सकता है, मुझे मोहब्बत हो ही सकती है किसी से, मैं उनके बारे में लिख रहा हूँ। लेकिन ये मेरे दिमाग में एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, लेकिन जब एक ही चीज़ बार बार मेरे साथ हो रही है, जब एक ही तकलीफ बार बार मेरे ऊपर हावी हुई है, तो तब मैं जब लिख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि वो चीज़ मैं बहुत अंदर से फील कर रहा हूँ, बहुत अंदर से महसूस कर रहा हूँ। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जब अच्छा दिल होता है, सच्चा दिल होता है, तो कला आपसे दूर नहीं जा सकती, तो कला आपसे दूर ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, कहीं ना कहीं उसको आपके पास आना ही होगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे कोरोना का दौर हुआ, मैंने देखा कि जो घर के बड़े हैं वो घर से बाहर निकलते हैं सिर्फ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, राशन खत्म हो रहा है तो वो सामान लेने के लिए, और क्योंकि उन्होंने अपना काम भी छोड़ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है घर पे, तो उनका पेट कैसे पालेंगे। लेकिन उसी बीच में मैंने ये भी देखा है कि एक ट्रांसजेंडर था जिसको बिना डर के जो निकल रहा था, क्योंकि भाई हम मेरे भाई बहनों का पेट मुझे भरना है, ठीक है। सब लोग बोलते हैं कि उनको बच्चा नहीं होता, उनको औलाद नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरा कलकत्ता का बाप बन के मैं बैठा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे कहाँ का है मुझे नहीं पता। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है, और मैं ये बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ कि 1, 2, 3 मैं इतने लोगों का बाप बन के बैठा, और मैं उस चीज़ को, उस फीलिंग को बहुत अच्छे से फील कर सकता हूँ, उनके जब वो अपने मुँह से पापा बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और एक चीज़ मैं फिर भी यही बोलूँगा, हम पागल हैं, बहुत अच्छी बात है, और ये पागल मैं अपने सवाल में लेता हूँ, क्योंकि आप इतिहास खोल के देखिए, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, और अगर इतिहास बदलना होता है तो पहले ही पागल होते हैं। ये जो है आपने बात कही कि पागलपन से अगर पागलपन ना हो तो क्रिएटिविटी है ही नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जो हम लोग मुझे भी कोई कहता होगा मैं पागल हूँ, क्या मुझे पड़ा हुआ या मतलब कुछ तो पागलपन, जुनून जिसको, बिल्कुल, तो वो जुनून है आपकी तो आइडेंटिटी के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो तो आपका जुनून है कि उसको लोकेट करना है। हम लोग जो कई बार हम मतलब जो आम तौर पे होता है, वी टेक आवर आइडेंटिटी फॉर ग्रांटेड, वहीं पे हमारी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाउ कैन यू टेक योर आइडेंटिटी ग्रांटेड? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस दर्द को, इस खोज को, इस एक्सप्लोरेशन को पहले खुद समझना कि एक्सप्लोरेशन है, उसकी कोई डिफाइंड कंक्लूजन नहीं है, और वो अगर हम भी सारे लोग उस जर्नी में हैं तो एक दूसरे को समझने की शक्ति भी पैदा होती है। देखो मैं और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि काम नहीं हो रहा है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर काम नहीं हो रहा होता और हमें समझना, मतलब हमें नहीं समझ रहे होते लोग, तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते। तो जहाँ बुराई है भाई वहाँ अच्छाई भी है, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है, तो ये तो जोड़ा है, तो चाहे सुख दुख हो, चाहे अच्छा बुरा हो, और हम जो कर रहे हैं हमें वो करते ही रहना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो अच्छा आना ही है और आके ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिंदाबाद। अच्छा, अब हम जो अगले स्पीकर की तरफ जा रहे हैं, विजय राजू मलिका, इन्होंने मुझे मास्टर क्लास कर दी,
1.5 hours की मुझे मास्टर क्लास मिली इनसे और बहुत अच्छा लगा बिकॉज थोड़ा सा मुझे एजुकेशन मिला इन द डायरेक्शन दैट शी वाज ट्राइंग टू थोड़ा सा ही कहूँगी क्योंकि अंदर सीख करते करते टाइम लगता है सब चीज़ों में लेकिन आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ and thank you that you gave that much of time and what I am planning is to create master classes in transgender. After being with her yesterday, we have today listened to so many people and each one of you is capable of giving a master class to me. Right? So we will create space for it. Very good. A very good afternoon, one. Myself, I am Vijay Rajmalika. I am basically an intersex bilingual writer. I identify myself as a transgender poet. And I've been awarded by the state government of Kerala twice. I've been part of different government programs in Kerala. And most of my poems are part of many syllabi in different universities in India. So coming to the point, I will stick on to the point. Firstly, it would be inclusion in syllabus, especially like whatever there are literature or mentions, whatever we have to know about transgender, let us include in the syllabus. Secondly, encouraging transgender literature, let everyone write, let us document different perspectives. Third one, awarding the existing vernacular transgender writers, considering them along with while awarding the translators. I think it's very clear to you. Fourth one, addressing the socio-cultural versatility of transgender umbrella, especially addressing the intersectionality. Fifth one, holding researches on history, transgender life in the country. Promoting sandwich programs with global literature. Next is use of technology, social media, especially Wikipedia. Next, addressing the coining sensitive words and terminologies. I'm proud that while I started writing, we didn't have good words to express ourselves. I would contribute around 10 to 12 words to the Malayalam literature, and I see that I make sure that every time I produce a book, I contribute a new word. I've contributed 8 words, sorry, 8 books in literature, 7 were in Malayalam and 1 is in English. And that book is also part of a university in Kerala. Next is redefining the history. That is very important, especially from a human perspective. We have all Deva, Devata, Arthanari, Mohini, everything, and trans history is being recorded like that. Why can't we have a perspective of a human side? That is also important. Next is transgender poetry had a shift to while I was beginning to write in Kerala, I remember it was just a transgender literature. Now we had a paradigm shift from transgender writing to poem writing, which is addressing the differences among the community. So while articulating this, I just want to tell you that we had a society which was objectifying the transgender people, which has changed into subjectification. Now this is an ultra modern, post-modern, modernism that we are facing, and this is a post-truth time. So why it's quite important that we look forward, conducting different kinds of discourses and also establishing programs, etc. And to conclude, it would be inclusion, promotion, research, critical evaluation, addressing intersectionalities, creating a sensitive language, and alternative perspective would be encouraged. Thank you. Reconsider history. My thoughts on the reconsideration of our constitution. That's a separate thing. Not separate. And one thing I just want to tell all the transgender boys, please be political while you write. Because as an intersex person, doctors call me DSD, that is disorders in sexual development. But I have recoined it, that is
that is differences in sexual development. You may call me differences, but I enjoy, I celebrate the difference. And that is society may be progressive or regressive. Let us sit and write our histories. And I'm very happy that, you know, sometimes people ignore me, but I'm very happy because there will be a time when society will come and search for transgender literature. There will be a time. So my duty is to write. That is why, Vijaya, we are trying very hard that whatever is being written as authentic self-expression, whether it comes as personal history or the history of your community or the understanding that you have of the general scene, yes, I think it's important to document all that, and that is why the importance of the archives. ये तो ठीक नहीं ना, वो तुम कब बात है, वो हमारे नहीं, वो तो तुमने बोला है कि क्या है ना, शिक्षक के अंदर कौन challenging section. वो तो उनका मेडिकल टर्म है, ये तो वो अलग है. Who cares? I think we have to pat ourselves on the back that we have made it on time. Oh, Suman, you have a slogan. I'm so sorry. Sorry. I'm so sorry. बोलिए. अभी भी है हमारे पास टाइम. Thank you so much कि मुझे आज ये करने चाहिए. तो मेरा पहला है, जैसे मैंने आपको बोला था, तो आप बोलिए. तो ज़्यादा दिन कम्युनिटी को आया हुआ मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 4 साल हुआ है. मुझे अपने आप के बारे में पता नहीं था कि मैं क्या करना चाहिए. मैं उड़ीसा में एक छोटे से गांव से हूँ जहाँ से मुझे पता नहीं था कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, ट्रांसमैन क्या है, ट्रांस वुमेन क्या है. तो जब अपने आप के बारे में पता चला तो एक अलग सा पागलपन आ गया, और घर वालों को बताने के बाद जब एक्सेप्ट नहीं किए घर वालों ने, तो खुद के लिए कुछ करना चाहिए, तो इसीलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा. तो उस दिन के बाद अपना स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, अपना जर्नी स्टार्ट हुआ, और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ करने का ठान लिया मैंने. तो आज इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए थैंक यू. और लिटरेचर की जो प्रोग्राम आपने मुझे जब बताया था कि कुछ पॉइंट लेके आना है, तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि ट्रांस वुमेन केस में तो स्कूल ड्रॉप आउट बहुत होते हैं, क्योंकि उन लोगों को स्कूल में बहुत ही बुलिंग होता है. इस वजह से वो लोग आगे पढ़ नहीं पाते हैं, और ना ही कुछ बोलना मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगा ठीक से तो बोलेंगे कैसे. तो और ये ट्रांसमैन की बात, तो वो लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर उन लोगों का जो जेंडर डिस्फोरिया जिसको बोलते हैं कि एक ड्रेस कोड होता है कि फीमेल अगर है तो उसको फीमेल वाला ड्रेस पहनना चाहिए, मेल वाला ड्रेस पहनना चाहिए. तो वो अनकंफर्टेबल जोन में जो लोग बैठते हैं, तो उसके अलावा जो पढ़ाई होता है उन लोगों का, तो वो अच्छे से कभी नहीं कर पाते. तो इस दौरान वो कभी आगे आना चाहते हैं पर आगे बढ़ नहीं पाते. और लिटरेचर के लिए कुछ क्रिएटिविटी करना चाहिए, जिसकी वजह से उन लोगों को साथ भी रहना चाहिए, कुछ समय निकालना चाहिए इन सब के लिए. जब उन लोगों को जैसे कि मैं अपने बारे में बोलूँ, जब मुझे पता चला, जब मैंने अपने बारे में पता चलने के बाद घर छोड़ा, तो बहुत कुछ सोच के छोड़ा, पर आगे आने के बाद अपना इनकम सोर्स देखा कि मैं क्या करूँगा, खाना कैसे खाऊंगा, रहना कैसा चाहिए मुझे. तो ये सोच मुझे ले चली कि मैं किस पहुंच जाऊंगा. तो ये लिटरेचर या फिर क्रिएटिविटी कुछ भी हो तो उसके लिए कुछ टाइम निकालना पड़ता है, तो जो कि हो नहीं पाता है. पर दुनिया जो है, जो हर टाइम दबाना चाहता है कि तुम एक ट्रांसजेंडर हो और तुम नीचे रहो, तुम पीछे रहो, तुम कहीं आगे मत बढ़ो. तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि पीछे कभी नहीं खड़ा होना है. हम भी इंसान हैं और आगे आना चाहिए. लड़ाई कल भी था, लड़ाई आज भी है, और लड़ाई हमेशा रहेगा. हाँ, पर कभी हारना नहीं है और हमेशा जीतना चाहिए. पर उसके लिए आपका जो कोशिश है वो कोशिश हमेशा रहना चाहिए. और
जेंडर की बात अगर आप देखोगे तो उनको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कंफर्टेबल जोन। अगर वो लोग कंफर्टेबल जोन में नहीं बैठेंगे तो कुछ भी बोल नहीं पाएंगे वो लोग। आज अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आप लोग के साथ हम सब कंफर्टेबल है, इसीलिए अपना दर्द आप लोगों को बांट रहे हैं। अगर कंफर्टेबल जोन नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से अगर जैसे कि मैं हर जगह पर बोलता हूँ कि बुक में ट्रांसजेंडर का जो मीनिंग रहता है वो हमेशा डेफिनेशन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर का मीनिंग जो भी बोलता है तो बोलते हैं कि वो हिजड़ा ही बोलते हैं, पर उसके अंदर ट्रांस वुमेन भी आते हैं, ट्रांस मैन भी आते हैं, ये कोई नहीं जानता है। बस ट्रांसजेंडर बोलो तो मतलब तुम हिजड़ा हो, यही। तो ये भी डेफिनेशन के साथ हर जगह पर छपना भी चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए। कंफर्ट जोन वाली जो बात है उसी को इस दायरे तक नहीं रहना है। हाँ, वो कंफर्ट जोन जो है वो हाँ एक अंदर भी है और फिर बाहर उसका दायरा बढ़ता जाए तो तभी तो बात बनेगी ना जी। तो समाज को धक्के लगने चाहिए। तो वही सोसाइटी ये पहले एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कोई आगे बढ़ेगा भी नहीं। अगर आप एग्जाम्पल पे तो देखो कि हमारे पास कितने सारे ट्रांसफॉर्मर सब हैं जो कि आज आके यहाँ पर बैठे हैं, पर एग्जाम्पल हम लोग इतने सारे हैं पर कभी काउंटेबल नहीं होते हैं कि हम लोग ये सब भी कर रहे हैं। अगर आप हर स्टेट में जाते हो, हर स्टेट में एक अच्छा एक्टिविस्ट है या फिर एक्टिविस्ट छोड़ो, एक अच्छा इंसान है जो लोग काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, पर कोई गिना चुना नहीं मिलेगा। अगर आप सीज जेंडर की देखो तो हर कोई लिखा रहता है कि हाँ यहाँ पर जाओगे तो ये इंसान मिल जाएगा, यहाँ पर जाओगे तो ये इंसान मिल जाएगा, पर हम लोगों के बारे में कोई नहीं बोलता कि आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर भी एक इंसान है जो आप लोगों की मदद कर सकता है। आपका तो बेकार नहीं बनते, वो जो है कि जो फीमेल मेल टू फीमेल होता है वो तो बेकार बन जाता है, जो फीमेल टू मेल होता है उसका कोई बीक भी नहीं दें। मैम इसीलिए तो ज़्यादा दिमागी जो संतुलन है ना वो ट्रांसजेंडर ज़्यादा करवाता है। ट्रांस वुमेन को पता है कि वो घर से बाहर निकल के दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं, उनके पास दो ऑप्शन है, लेकिन ट्रांस मैन का ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सोचेंगे अपने शरीर को, जब तक हमारे ट्रांस फॉर्म नहीं हो रही यार मेरा यूज तो नहीं हो जाएगा। आप मेरा कहने जैसे आप दोनों हो या आप भी हो, मेरा कहना एक बनाओ, एक पॉलिसी सी बनाओ। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ भी उनको वोटिंग करना है। पॉलिसी का मतलब क्या है? ये कि सब इकट्ठा होते हैं, कोई अगर काम कर रहा है या सिर्फ किसी के एकेडमिक काम करने की बात होगी, वो नहीं ना बात है, वो तो जो होता है होने को। लेकिन इन्फॉर्मेशन भी सब एक कम्युनिटी से जुड़ती है ना, लिखने वाले अगर 10 लोग जुड़ गए, 15 लोग जुड़ गए तो हम देखेंगे। अगर आपको अकेडमी चाहते तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारण ना चाह सके तो बहुत से है ना, मैं पर्सनली आपको एश्योर करती हूँ कि आपकी इम्पोर्टेंस अब जाएगी। I assure you. And Mrs. Paul, I also want to add a point. The first came in my mind, like many of us, many of the participants have this talks about economic injustice and social injustice that barriers us to continue writing. So why not Sahitya Akademi initiate a fellowship for transgender? I just discovered, and that is what made me think also. I discovered that Ashoka University has transgender fellowships. Very competitive, very competitive. Very competitive. No, it will be. No, I'm not interrupting you. Based on my experiences, I have applied a lot of fellowship, and these are dominated by privileged people. Yes. Within the transformation, within the transformation, what we have to be very careful and very just understand is the trans privilege and underprivileged people. Yes. So like there are trans people who claim that they realize their gender identity in a very later age. Yes. So in that in that exploratory time, then they got a lot of time to go to the schools, getting higher studies and getting higher degree. Center, let me tell you, one of the people that we interviewed or we had an interaction, she was from a village, right? And she got this fellowship. So, there is a problem on both sides, because how do you locate
You are right. I mean, people who are privileged, they find ways. They have contacts, they have all of that. But what I am suggesting is that if we have material, that material will lead to validation of this material. Once it's validated, you get my point. If it is validated that yes, it exists, people will have to acknowledge through fellowships and all. And this suggestion that you are giving about Sahitya Academy, of course we should put forward this proposition. We should. No. Sahitya Academy is actually the primary stage. I think we will do it. This is not But it's not all about the primary stage, We will do it. because I think that if we can talk about the Indian Constitution, when we got the fundamental right, when Act is here, the Transgender Person Protection Act, so all the autonomous bodies, central government or the state government, they should ensure the policies for the transgender people. They have to do. They can't objectively, they have to obey to the judgment of the Supreme Court. As I represent the government of Uttar Pradesh, I am advisor to the Chief Minister of Uttar Pradesh Department of Social Welfare, and I am working for a Uttar Pradesh Transgender Welfare Board. It has to be incorporated. Because when we talk about the judgment, how the implementation of the Harijan Act, we can talk about Act 3, which is, we have implemented many things, we have implemented many tribal welfare schemes. So now, the autonomous body like a Sahitya Academy, they have to ensure the transgender people, not only perspective of the fellowship, also the perspective of making them, providing them grants, organizing their jobs, organizing them a separate kind of literature festival for the dedicated at transgender, like Mrs. Paul had recently organized beautiful symposium. So I would like to say, if we will not listen, we should go to the higher authority. We have a RTI, we have many things to be done. We should do the correspondence and send it to the Prime Minister of India, also the President of India. They have to do, because when आप जब बोलेंगे नहीं, when आप अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा. Yes, that has to be. जब VP हमें मांगना होता है, तो हमें उसको कहना पड़ता है कि ना बेटा आप तो लेके जाओगी. Then only that person will get. तो हमें हमारा right मांगना नहीं, छीनना पड़ेगा. आप ये सुनिए, सिचुएशन अलग-अलग रहता है. उस दिन में क्या इसे प्रॉब्लम है. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँ. अब ये बात को प्लीज आप सारे गौर कीजिए. अगर एक पॉजिटिव स्टेप हो रहा है, ये जो क्वेश्चन, and I am saying we are going to bring it Indian, we are going to bring an anthology, we are going to create archives. इसका बढ़ेगा, and this suggestion will be incorporated in this. Yes. What you are saying, we will, because you know this is something that we need to basically bring into the eyes of not just one or two people in power. That's not the point. It is the whole council who have to wake up to it. And if the proposition was in writing, they will look at it. They will have to. Agree. So छीनने का मतलब अगर हम जरा शोर मचा के करेंगे, will be dismissed. अरे एक शोर मचा. शोर मचा के कारण से आजादी हमें शोर से मिला है. नहीं सुनिए. आप कैसे how can you forget the other thing? Just a minute. नहीं, अगर हम logically कोई बात कर रहे हैं, peacefully भी हो जाए. नहीं दो होते हैं, गरम दल और हमेशा नरम दल शुरू से भारत में यहाँ है. और हम मुझे लगता है हम तो गरम दल के नेता हैं और आप नरम दल के लोग. All I'm saying is that there is one window that has opened, and if this window is opened and we have created another window and another window, आप तो बहुत चाहती हैं Mrs. Paul to invite the people like sorry to say you. यहाँ पे सिम्पोजियम प्लान हो गया, हम देख रहे हैं फेसबुक पे. Oh my God, साहित्य अकेडमी का इवेंट and I was trying to बिल्कुल ही बुलाया. देखिए मैडम, आप ये बात आप कर रही हैं ना, तो सुनिए. आप तो फेवरेट का सेलिब्रिटी कॉल की मार जी और आगे का आगे मिनिस्ट्री बहुत जल्दी मैं करूँगी आपके. Alira RCI also. मुझे जवाब चाहिए होगा. How can you forget that these transgender? I am basically telling you, अगर आप positive रहना चाहते हैं. नहीं हम तो positive हैं. आप positive होइए Mrs. Paul. This is time to positive yourself. Don't go for favorite. मुझे कौन कोई जानते थे आप? Did I know you? नहीं तो then how can you get rid of that? No, just a minute. Let's not make it a battleground. We are having a talk which is out of amicability and understanding. I did not know anyone, and it's not I. I was told
cannot have in a symposium technically more than 10 people, out of which 3 has to be from Delhi and 7 from outside. So how do you do it? It has to be Delhi. It has to be Delhi. It's a state. Anyway, why are we doing this discussion here? It is so that everybody understands there is no favoritism. Please believe me if you have any belief. But हम तो अपनी in तरफ an से दे देंगे, honest, we have a such forward, don't worry, Mrs. Komal. आप हर जगह मुझे पाएंगे in every festival because इनकलाब जिंदाबाद. We don't need to worry at all. So thank you very much. Anyways, We will break for lunch now. 2 पॉइंट ये सारी जो डिस्कशन की बात है वो कहना चाहूँगा। एक तो जैसे अभी सुमन ने बात कर रहा था कि जब हमें एटमॉस्फेयर ऐसा मिलता है जहाँ पे हम कंफर्ट हो पाते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर हम खुद ढूंढते हैं कि सामने से कुछ खुली बाहों से हमें भी आगे बढ़े। वहाँ पे एक्सेप्टेंस का बात आ जाता है। अगर हम कोरोना जैसी बीमारी को अपना सकते हैं, पहले डरे उससे, लेकिन बाद में हमने उसे अपनाया, तो हम तो इंसान हैं और हम भी जज्बात, हम भी दिल रखते हैं, एक इंसान हम भी हैं। तो अगर हमें भी बाहर एक्सेप्टेंस मिली है तो उम्मीद है बाहर भी मिलेगी। वो होने के बाद वो चीजें और इजी हो जाएंगी। कोशिश हुई। Thank you. We will meet at the मैं थोड़ा सा सम्यकता को मानने वाली दूसरी कहा था तो एक एकेडमिक लेवल पर जब साहित्य से हम बात करें तो अगर पॉलिसी की लड़ना है तो गवर्नमेंट से ऑलरेडी लड़ रही है। हमारा 1% आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं हम, वहाँ पर स्कॉलरशिप फेलोशिप के लिए लड़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं। तो वो भी गवर्नमेंट के साथ लड़ाई है, तो वो साहित्य अकादमी नहीं दे सकता है। साहित्य अकादमी का मुझे ये कहना है कि हम यहाँ पर एजुकेशन थोड़ा आप अधिकारी पहचान के हो तो हमारे लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी की है, गौरी सावंत की है, इधर बहुत सारे डॉक्टरेट बैठे हैं। इनकी लाइफ स्टोरी एक पाठ्यक्रम में एक धड़ा बोल के आप लोग मराठी में धड़ा बोलते हैं, उसमें क्या तो अगर कोई बुक में 8th क्लास के बच्चों को 9th क्लास के बच्चों को अगर वो एक पाठ्यक्रम में आ जाएगा या फिर बोला था तो